Anjali, the Facebook time has started. Yes. Hello, everyone, and a very warm welcome on behalf of Anhad and Satark Nagrik Sangathan, SNS, to this discussion today. We are discussing Sedition Se Azadi, freedom from sedition. And this is in the context of the recent Supreme Court judgment on sedition. And we are asking whether it is indeed a step towards strengthening freedoms. So a very warm welcome. We know the kind of role that sedition has played in causing a chilling effect on dissent, on protest in our country. The history, if we look at it, historically, it was after the 1857 revolt, and we talked about it in our last webinar that Anhad and SNS conducted, the first war of independence, as it is called. After it was proclaimed that India will be governed in the name of the crown. It was in 1860 that Section 124A of the Indian Penal Code, IPC, was brought in. And basically, it was to punish any Indian subject who expressed disaffection towards the government. It was essentially a colonial law which was meant to control subjects. People like Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak were imprisoned, they were jailed for sedition. And once we became an independent country in 1947 and we gave ourselves the constitution in 1950, we became a democratic republic. One really would have thought that a law like sedition, a provision like sedition would really have no place in our statute books. But what we have seen is that not only has sedition continued, but it is alive and kicking. It has been used very effectively to criminalize and silence peaceful protests and dissent. It's caused a chilling effect, and that's what really has been the rationale and the real reason for using this law, even in independent India. Thousands of people have been booked for sedition, including marginalized communities. And many places we've seen that the law hasn't been used against just an individual. It's thousands of cases that have been filed. So it's been used to target marginalized communities that are fighting against injustice, that are struggling for their basic rights. It's been used against journalists, it's been used against activists, against academics, and it has been used with impunity. So it's almost like a favorite tool of the administration, of the police, which uses it with impunity to silence people, to arrest them, to incarcerate them for long periods of time. And this is despite judgments of various courts, including a Supreme Court judgment of 1962, the Kedarnath judgment, where the court very clearly said that sedition, while not striking down sedition, the court said that only if it causes violence or incitement to violence can this be invoked. Despite that, we've seen absolute blatant misuse of sedition. We are at a historic juncture today, and we saw that on the 11th of May, not so long ago, about 10 days ago, the Supreme Court of India passed an order. Basically, it put Section 124A of the IPC in abeyance. Essentially, it said that the use of sedition had to be put on hold. So we thought that this is something that is relevant for all citizens in a democracy to understand, for everyone in our country to engage with, everyone who is committed to democracy, to peaceful protests, to holding power to account, to showing truth to power. Everyone should understand what really this order means. And we are joined by a fantastic panel today, a panel which comprises people who have been charged with sedition in recent times.
It comprises researchers who have researched into how sedition has been used very effectively. This issue has been researched, and of course we are joined by legal luminaries. We have with us Justice Lokur and Vrinda Grover, who will be talking to us, explaining to us about sedition, what this order means for us and how we should understand it. We are joined today by people from different places in the country, also they're watching on Facebook, many other places. So we are trying to make this bilingual. The speakers will speak in whichever language they choose, Hindi or English, and I'll provide a brief translation. Sabhi ko zindabad, और अनहद और सतर्क नागरिक संगठन की ओर से आज की जो डिस्कशन है, हमारी बातचीत है, उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सेडिशन यानी कि राजद्रोह से आजादी। और अभी सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का उच्चतम न्यायालय है, वहां से एक बहुत अच्छा ऑर्डर आया है, जिसके तहत कोर्ट ने कई चीजें कही हैं सेडिशन के बारे में। तो हम ये सवाल आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वास्तव में हमारे अधिकारों को बुलंद करेगा, ये जो ऑर्डर है इसका क्या हमारे लिए महत्व है। जो राजद्रोह का जो हम प्रोविजन को समझते हैं, वो 1857 का जो रिवोल्ट था, रिबेलियन था, संघर्ष था, उसके बाद जिसको हम कहते हैं देश में पहली आजादी का जो स्ट्रगल था, उसके बाद जब भारत ब्रिटिश क्राउन के तहत आया, 1860 में इंडियन पीनल कोड के तहत 124A जो सेडिशन के नाम से जाना जाता है, वो लाया गया। और उसके तहत बेसिकली जो कॉलोनियल सरकार थी, ब्रिटिश राज था, उनका ये कहना था कि यदि कोई भी जो भारत में रहते हैं वो ऐसी बात करते हैं जो कि ब्रिटिश राज जो क्राउन है उसके खिलाफ डिसअफेक्शन, मतलब जो प्रेम की भावना है उसे कम करती है, तो ऐसे लोगों को पनिश किया जाएगा। तो उसके लिए ये कानून लाया गया था। ये कानून पूरी तरह से एक कॉलोनियल समय का कानून है। इसके तहत महात्मा गांधी जैसे, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों को अरेस्ट किया गया, उन्हें जेलों में भरा गया। और जब हम लोग ने आजादी हमारे देश में मिली, हमें 1950 में संविधान हमने अपने आप को दिया, तो उसके बाद जब हम लोग लोकतंत्र बने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने हम, तो ऐसे से कानून का, ऐसे प्रावधान का कोई जगह हमारे कानूनों में नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा है कि लगातार सरकारें अलग अलग जगह पर इस प्रावधान का इस्तेमाल करके लोगों को जेलों में भरती रही हैं। एक दो लोगों को नहीं, हजारों लोगों को, ऐसे लोग जो कि सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जहां पर भी अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और पीसफुल तरीके से उतरते हैं, उनके खिलाफ भी सेडिशन का, राजद्रोह का कानून इस्तेमाल किया गया है। ये कहा गया है कि आप तो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इसके अंदर ऐसे कम्युनिटीज रहे हैं जो कि हाशिए पर रहते हैं, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ और अपने जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आवाज बंद करने के लिए, कुचलने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। साथ ही में जो पत्रकार हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो एकेडमिक हैं, जो कि सरकार की कुनीतियों के ऊपर आवाज उठाते हैं, मानव अधिकार के हनन पर आवाज उठाते हैं, जो हमारा पर्यावरण का जो को नष्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन ऐसे तमाम लोगों पर सेडिशन का, राजद्रोह का कानून लगाया गया है। और इसके बावजूद
कि कोर्ट्स ने कई बार ये कहा है, और 1962 में केदारनाथ की जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे ही किसी भी केस में आप सेडिशन को, राजद्रोह को नहीं लगा सकते हैं। केवल जहां पर वायलेंस हुआ हो, जहां पर हिंसा भड़काई गई हो किसी शब्द से या काम से, केवल तभी उसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बावजूद पुलिस और प्रशासन के लिए ये बहुत ही मामूली हथियार है जिसका वो लगातार इस्तेमाल करते आए हैं। आज हम ये डिस्कशन इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने एक ऑर्डर जारी किया है। 11 मई को 10 दिन पहले ये ऑर्डर आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि 124A धारा जो है आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की, उसको इस्तेमाल अभी नहीं किया जा सकता, अभी के लिए होल्ड पर है, वो अबेंस में रखा गया है उसे। ये ऐसा एक ऑर्डर है जिसने तमाम लोगों में ऊर्जा भरी है, और इसको समझने के लिए इसका क्या मतलब है, इससे हमारे अधिकारों पर ऐसे लोग जो सवाल पूछते हैं सरकार से, आईना दिखाते हैं सरकार को, और ऐसे सभी लोगों को जो सत्ता में है, सत्ताधारियों को, उन सबके लिए ये बहुत ही जरूरी ऑर्डर है। और आज हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पैनल है जिनकी हम बात सुनेंगे। वो हमें बताएंगे कि इस ऑर्डर का क्या हमारे लिए क्या मायना है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जस्टिस मदन लोकुर जी से। जस्टिस लोकुर, हम सब जानते हैं, उच्चतम न्यायालय के बहुत वरिष्ठ जज थे, और उन्होंने बहुत समय तक हमारे देश की जुडिशरी में वो रहे, उच्चतम न्यायालय में रहे, और वो सोशल जस्टिस बेंच, जो सामाजिक न्याय का बेंच है, उसे भी हेड करते थे। पर जस्टिस लोकुर अपनी आवाज को केवल कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के बाहर भी लगातार लोगों के अधिकारों के लिए और हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो कुचले ना जाएं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस लोकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले 15 से 18 मिनट में आप अपनी बात प्लीज रखें। I request Justice Lokur to please speak to us for the next 15 to 18 minutes. We've requested Justice Lokur to focus, amongst other things, on what really this order means for us, and how does he see this unfolding as we go forward. The floor is yours, Justice Lokur. Thank you, Anjali. Well, I would like to begin by making some sort of a clarification, if I may. This is not a judgment that has been delivered by the Supreme Court. It's an interim order, right? And in the interim order, of course, they've said a few things, but it's not a final judgment. The second thing is that what the Supreme Court is looking at the moment is whether the case should be referred to a bench of 7 judges or should not be referred to a bench of 7 judges. You had mentioned that in the case of Kedarnath Singh, the Supreme Court had taken a decision, a bench of 5 judges of the Supreme Court had taken a decision to say that section 124A of the IPC is constitutionally valid. Now, either that judgment is correct, in which case the Supreme Court may say, the 3 judges may say that, well, there is no need to refer it to 5 judges, to 7 judges, because we do not think there's anything wrong with that judgment. It is also possible that the Supreme Court may say, those 3 judges may say that, well, the matter requires to be looked at afresh, and therefore we would like to refer it to 7 judges and see whether the judgment is correct in the sense that section 124A is constitutionally valid or not. So this is really the parameter of the judgment or the order that has been passed by the Supreme Court on 11th of May. Now, one of the things that the Supreme Court has said quite extensively
They have quoted from the affidavit of the Government of India. Well, there is a lot to say about the affidavit that has been filed by the Government of India, but I don't want to go into that at the moment, but only to explain really what is the order passed by the Supreme Court and what are the consequences or what are the ramifications of the order. It is important to note that the Supreme Court has recorded that the petitioners who approached the Supreme Court say that the law of sedition, that is section 124A, is being misused. That is the case made out by the petitioners. The Attorney General for India, he also says that the law of sedition is being misused. And the example that he gave was about the threat to recite Hanuman Chalisa outside the Chief Minister's residence in Mumbai. So the petitioners and the Attorney General also say the same thing, that is, the law is being misused. The Government of India has not expressed any opinion one way or the other. They have not said that the law is being misused. They have not said that the law is being properly used. They've just, held their cards, if I can say so, close to their chest without saying anything, except that, we will re-examine and reconsider, and that re-examination and reconsideration will then be decided upon by the appropriate forum, and the appropriate forum in this case obviously is Parliament. But like I said, I don't want to go into the affidavit that has been filed by the government. What the Supreme Court has said, and I will just break up the order into a few directions or expectations. The Supreme Court has, after noting all this, they have said that we expect that the law will not be used by the governments. One of the reasons why they seem to have said this is because they have said that, well, it's a colonial law, and the Government of India has said it's a colonial law. 1,500 laws have been repealed, and we are going to reconsider and so on. So the Supreme Court said that we expect that in view of this, it will be appropriate not to use the law, which means effectively that please hold your hands, don't take any steps towards implementation of the law. The Supreme Court has also said as a part of its directions that we hope and expect that there will not be any registration of any FIRs for sedition, number one. Number two, they have also said that investigations will not continue. Number three, they have said that the state, which is the central government or the state governments, will not take any coercive measures. So really, although they have said we hope and expect, that's in a sense a polite way of telling the governments that, listen, please don't do this. Please don't register FIRs. Please don't continue with investigations, and please don't take coercive measures. Of course, the Supreme Court could have been more positive and said that, forget about hope and expect, we direct in this manner. But like I said, they still haven't decided whether the law is constitutionally valid or it is not valid. The Supreme Court has also said that in the cases that are pending and which have already been filed, the accused person can approach the court for appropriate relief. Now, frankly, that's not saying much, because if a person has been accused of an offense, that person can always approach the appropriate court for relief. So the Supreme Court has not really said very much by saying that, you can approach the court for relief, because that is in any case the entitlement or the right of any accused person. But they have added to that by saying that when that accused person approaches the court for relief, then that concerned court will consider the order that has been passed
That is the order that has been passed on 11th of May, and will also consider the view expressed by the central government, namely that this is a colonial law and that 1,500 laws have been repealed. So, in a sense, giving a hint to the court wherever an application is filed, that please look at it, in a more liberal manner than you have been doing in the past, because of these factors which have come out during the course of the hearing and which have been mentioned by the government of India in its affidavit. So, to this extent, I think it's positive that a person can approach a court, and the courts have been sort of hinted at that please be a little liberal when you're dealing with such cases. What about the future? For the future, now this is a bit of a problem. For the future, the Supreme Court has said that trials, appeals, and proceedings will be kept in abeyance. So, in one way, it is good because the trial will not, continue. It is also good that an appeal will not continue and any other proceedings will not continue. But at the same time, it can have a damaging effect in the sense that a person is completely innocent, right? And the allegation of sedition and a case or an FIR or a charge sheet has been filed, just because the prosecution thinks that sedition has been committed. Now that person will have to wait for the trial to conclude. But if there's a stay, the trial will never conclude, until the Supreme Court lifts the stay. Similarly, a person who has been convicted, that person has filed an appeal. I would assume that person has filed an appeal, but then the hearing will not go on. So this person will not be able to prove his or her innocence. So in that sense, the direction that has been given by the Supreme Court that trials will not proceed, appeals will not proceed, I don't think that that's good. They should have given the option to the accused person. What does he or she want? Should the trial go on? Because then that person will be able to prove that I'm innocent. Should the appeal be, heard? That will again give an opportunity to the accused person to prove that I'm innocent. So this is, a bit of a problem in that sense. Now, one thing which I have not been able to, understand in the order passed by the Supreme Court is in the directions that they've given in paragraph 8E. In paragraph 8E, they have referred to some proposed directives which are proposed to be issued by the government of India. I don't know what those directives are. They've not given any indication of what those directives are. They've just referred to some proposed directives. So it would be worth knowing what those directives are, what do they say, what are the implications of those directives. Here, I think it's a bit of a letdown in the sense that we don't know as citizens what are the proposed directives. Now, what I find which is missing from the order passed by the Supreme Court is what I would refer to as collateral damage. In one sense, a trial not proceeding, the person says, I'm completely innocent, you state the trial, that's a part of collateral damage, but I'm on a different issue altogether. One is that, I can give you the example of this young environmental activist from Bengaluru, Disha Ravi. She was keen to go and attend COP26. It appears that about 3 months prior to her scheduled departure, she applied for a passport. And no steps were taken to issue the passport. Normally, it should not take 3 months. But here, because she was charged with sedition, I'm assuming,
that because she was charged with sedition, they did not process her passport. So you will have hundreds of people against whom allegations of sedition have been made and FIR has been filed and cases pending in the court. Now, these people, if they want to go abroad, their passport will not be processed. And it's not as if they're going abroad for tourism or something. Some of them may be going abroad for studies, for higher studies, young students, young persons. They will not be given a passport, right? There may be some people who might be applying for a job, a government job. Now, in that application for a government job, one of the columns usually is there any case pending against you? And the person says, yes, there's a case pending against me and it's a case of sedition. That person will never be selected. I mean, they will just reject the application. That, listen, we can't, think of appointing a person who is accused of sedition. It's a very, very serious offense. So that's the end of it. So this collateral damage, to persons who have been at the receiving end of the misuse of the law of sedition or the abuse of the law of sedition, I think that is something which is very, very serious. And unfortunately, I think the Supreme Court has not looked into this aspect, because it can have a very serious impact on students wanting to go abroad for study, other persons who want to go abroad for some other work, like Disha Ravi, for example, I had mentioned, or persons who want to apply for jobs. It could also happen, by the way, in the private sector. If somebody says, listen, I've got a case of sedition, that employer may say, sorry, I'm not going to employ you. It's a very serious offense. So, and again, one never knows, if the law is being misused, then the police might come to the employer's house. Oh, you've employed a person who's, committed sedition. So you must be also part of that conspiracy and so on. So these are some of the problems. The other thing is, it's good in one way that investigations have been halted, right? Which means that the charge sheet cannot be filed. If a charge sheet cannot be filed, then the person who is in custody and who's not been given bail will be entitled to default bail. So in that sense, it's good for that person that, the investigations have been halted, because then that person will be entitled to default bail. Status quo order, I don't think is good, generally speaking, in cases of persons who've been victimized or who are, at the receiving end of some political vendetta or some other kind of, vendetta against whom, cases of sedition have been filed. The last thing that I would like to say, and which again is a matter of very serious concern, is that there is a parallel provision in the Unlawful Activities Prevention Act under the UAPA. Section 8, Section 13, read with the definition of unlawful activity. Now, unlawful activity under the UAPA is defined as causing or is intended to cause disaffection against India. This is the only difference, disaffection against India. Now, in sedition, it is disaffection towards the government, right? That's the only difference. In sedition, it's against the government. Unlawful activity, it's against India. Now, really, the government represents India, right? It's not that the government is one and India is another entity altogether. The government represents India, or India is represented by the government. So, okay, now under the section 124A, there are some explanations which say that the following will not be sedition. All right, so you can come under one of those explanations and you will not be, accused of sedition. But there is no such explanation under the UAPA. So what is disaffection? Disaffection has been explained, like I said, under 124A. But what is disaffection has not been explained under UAPA. So really anything which the police feels or the state government feels is disaffection
without any explanation being there in the law, they can say that, well, this person has committed an unlawful activity and therefore this person should be arrested and put behind bars for an offense of unlawful activity under the UAPA. Now that is very dangerous. Okay, because getting bail under the UAPA is a different story altogether. Under sedition, people have under, accusation of sedition, people have got bail. But getting bail under UAPA is very tough. So really, I don't know what the government will do when they reconsider, re-examine this, that, and the other. But if the government wants to continue in this policy of, arresting people, scaring them, stopping dissent, this, that, and the other, the easiest thing to do is, remove section 124A from the IPC and start arresting people under the UAPA. Effectively, people will then be jumping from the frying pan to the fire. I think this is something of very serious concern. So two serious concerns. One is the collateral damage, which I have explained. And the other one is this, possible use of UAPA. Yes, that's all that I have to say on this subject. Thank you very much. थैंक यू जस्टिस लोकुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने संक्षिप्त में पर बहुत बारीकी से हमें जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो आदेश आया है उसके बारे में बताया। जस्टिस लोकुर ने जो बातें कही उनको मैं हिंदी में संक्षिप्त में ट्रांसलेट भी अनुवाद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो हिंदी में इससे सुनना भी चाहेंगे। सबसे पहली चीज जो जस्टिस लोकुर ने बताई और जो उन्होंने कहा, क्लैरिफाई करी है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। अब अभी ये आखिरी मतलब ये आदेश है, अभी जजमेंट के रूप में नहीं है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 1962 की केदारनाथ सिंह जजमेंट जो थी उसके अंदर ये नहीं कहा गया था कि सेडिशन जो 124A है इंडियन पीनल कोड का, आईपीसी का, कि वो उसे रद्द नहीं किया गया था। तो अभी जो कोर्ट की जहां पर जजमेंट थी 1962 की, क्योंकि उसमें सेडिशन को 124A को अपहोल्ड किया गया था, तो सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि क्या उस जजमेंट को बदलना है और उसके लिए ये तय करना जरूरी होगा कि क्या 7 जजेस को बैठकर 7 जजेस के बेंच को ये मुद्दा सुनना होगा और क्या इसे 7 जज बेंच को रेफर किया जाए। तो ये एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर्स थे इस मामले में उन्होंने ये बोला है कोर्ट में कि सेडिशन का 124A का राजद्रोह का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने भी यही कहा, जो देश के एजी हैं उन्होंने भी कहा कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो हालांकि उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो था जहां पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जानी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ राजद्रोह के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने ये हमें बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश की सरकार है, उन्होंने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि इस कानून को वापस देखने की जरूरत है। 1000 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जिन्हें हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। तो जो सही काम है सोच समझ के इस कानून को रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए। ये कॉलोनियल समय का कानून है, तो हम ये विचार करेंगे और अप्रोप्रिएट फोरम, जो सही फोरम है जो कि पार्लियामेंट है, वो इस पर निर्णय लेंगे। तो ये 3 पक्ष कोर्ट में आए, ऐसा जस्टिस लोकुर ने हमें बताया। और उन्होंने कहा फिर
सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कॉलोनियल लॉ बताया है, तो कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है ये सही रहेगा कि इस कानून का इस्तेमाल अभी ना किया जाए, उसे होल्ड पे डाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कोर्ट ने कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं ये हम कि कोई और फ्रेश एफआईआर अभी दर्ज नहीं किए जाएंगे राजद्रोह के बेसिस पर, और इन्वेस्टिगेशन जहां पर भी जांच चल रही है वो जांच भी आगे नहीं अभी बढ़ाई जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कोअर्सिव एक्शन, किसी को जेल में डालना, ऐसा कोई भी काम सरकारें नहीं करेंगी राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल करते हुए। जस्टिस लोकुर ने कहा कि उनका ये मानना है कि जो कोर्ट का जो आदेश था वो इससे ज्यादा सख्त हो सकता था। कोर्ट डायरेक्ट का इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। कोर्ट कह सकता थे एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को कि हम आपको मना करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये कहने की बजाय कि हम उम्मीद करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी ये जो ऑर्डर है ये बहुत यूजफुल ऑर्डर है। अभी तक तय नहीं हुआ है कि सेडिशन का कानून लागू रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अब ये जरूर है कि जो अक्यूज्ड हैं, जिनके खिलाफ ये लगाया गया है सेडिशन का मामला, वो कोर्ट को रिलीफ के लिए अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हम अक्यूज्ड होते हैं, हमारे ऊपर कुछ लगाया जाता है मुकदमा, तो हमारे पास ये राइट होता है, संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हम कोर्ट्स के पास जाएं। पर क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी कोर्ट इसकी सुनवाई करेंगे वो 11 मई के जो ऑर्डर हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सुनवाई करेंगे। और जो भारत सरकार ने कहा है कि ये कॉलोनियल एरा का टाइम है, ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है और हमने 1000 से ज्यादा कानून रिपील किए हैं, हम शायद इसको भी करें। इन सब चीजों को रखते हुए मद्देनजर कोर्ट जो है ये सुनवाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट्स को कहा गया है कि आप ज्यादा लिबरली, एक खुले तरीके से, दिमाग से ऐसे केसेस को अप्रोच करिए। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। जस्टिस लोकुर ने कहा कि कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो ऑर्डर है, उसमें कहा है कि ट्रायल्स, अपील्स और प्रोसीडिंग्स, ये सारे जो हैं ये अभी के लिए होल्ड पे डाल दिए जाएंगे, मतलब इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। और इसमें ये दिक्कत है कि अगर कोई पूरी तरह से बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं, तो उन्हें अब ट्रायल होने की और ट्रायल खत्म होने तक की इंतजार उनके लिए बढ़ जाएगा, उन्हें करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन शायद कोर्ट को देनी चाहिए थी कि अगर जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि उनका ट्रायल आगे बढ़े जिससे कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए, या फिर जैसा कोर्ट ने कहा वो ट्रायल्स को रोक दिया जाना चाहिए। तो ये एक सवाल जस्टिस लोकुर ने कहा कि हमें सोचना होगा। जस्टिस लोकुर ने एक और जो थोड़ी चिंताजनक चीज है इस ऑर्डर में, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि जो पैराग्राफ 8E है इस ऑर्डर का, उसमें ये कहा गया है कि कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ प्रपोज डायरेक्टिव्स की बात की गई है। तो ये आदेश क्या होंगे, इनके ऊपर कुछ कोई लाइट नहीं थ्रो की गई। आज हमें नहीं मालूम कि ये किन डायरेक्टिव्स की बात हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय है जस्टिस लोकुर के मुताबिक। जो दो बड़े
चिंताजनक मुद्दे इधर उठ के आते हैं। उसमें से पहला मुद्दा जस्टिस लोकुर ने कहा, जिससे कि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कोलैटरल डैमेज, मतलब साथ ही में जो लोगों को नुकसान सहना पड़े, वो एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया दिशा रवि का, जो स्टूडेंट हैं और उन पर सेडिशन का, राजद्रोह का मामला चला था। वो देश से बाहर जाना चाहती थी, वो मुद्दों पे बात करती हैं, पर्यावरण के मुद्दों पर, तो वो ये सब बातों के लिए जाना चाहती थी देश से बाहर, लेकिन उनका जो पासपोर्ट है उसे प्रोसेस नहीं किया गया, दिशा रवि के पासपोर्ट को, और शायद इसी कारण नहीं किया गया क्योंकि उन पर राजद्रोह का जो है केस चल रहा है। और जस्टिस लोकुर ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पर किसी पे राजद्रोह का मामला लगाया जाता है, उन्हें अगर पढ़ना हो तो उनकी पढ़ाई पर एक बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, उन पर असर पड़ेगा उनके जीवन पर। और साथ ही में जो भी लोग जॉब्स के लिए, व्यवसाय के लिए ढूंढते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे तो पूछा भी जाता है कि क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, क्या आप अक्यूज्ड हैं। तो ऐसे में यदि कोई लिखता है कि हाँ मेरे पर राजद्रोह का मामला चल रहा है, तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती कि उन्हें वो नौकरी दी जाएगी। और ऐसा ही नहीं है कि केवल सरकारी नौकरियों में ये दिक्कत है, ये दिक्कत प्राइवेट निजी सेक्टर में भी होगी, क्योंकि राजद्रोह का मामला तो बहुत सख्त मामला होता है। तो ऐसे में सभी संकोच करेंगे ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करने में जिन पर राजद्रोह का मामला चल रहा हो, बल्कि ये भी एक डर बना रहता है कि जो नौकरी दे रहे हैं उन पर भी पुलिस दबाव बना सकती है कि आप ऐसे लोगों को काम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं अपने यहाँ, तो आप भी शायद ऐसे चीजों में जुड़े हैं। तो इस डर से लोगों की जो जीवन है, ऐसे हजारों लोग जिनके ऊपर राजद्रोह के मामले चल रहे हैं, उनके जीवन पर एक बहुत गहरा कुप्रभाव जो है वो पड़ता है और पड़ता रहेगा इस कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। इन्वेस्टिगेशन, जांच जो है उसे रोक दिया गया है, अभी के लिए उसे होल्ड पे डाला गया है, लेकिन और इसका मतलब यह है कि चार्जशीट फाइल नहीं हो सकती। तो इसका एक ये सीधा मतलब है, जस्टिस लोकुर ने कहा कि लोग जो अभी जेल में हैं वो डिफॉल्ट बेल ले सकते हैं, वो जुर्माने पर, डिफॉल्ट जुर्माने पर छूट सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज जरूर हुई है और इसकी ओर भी जस्टिस लोकुर ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन जो दूसरी चीज जस्टिस लोकुर ने बताया कि बहुत ही चिंताजनक है, वो है कि एक ऐसा ही प्रावधान यूआपा, जिसको हम कहते हैं यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत धारा 13 सेक्शन 13 को जब पढ़ा जाए, किस तरीके से अनलॉफुल, गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके साथ में अगर धारा 13 को पढ़ा जाए यूआपा के, तो उसमें लिखा है कि अगर कोई ऐसा कोई बात करते हैं, काम करते हैं जिससे कि भारत के खिलाफ डिसअफेक्शन हो, कॉजिंग और इंटेंडिंग टू कॉज डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, तो मतलब सेडिशन के जो कानून है उसमें तो सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन की बात है, जो प्रेम भावना है उसको घटाने की बात है। यहाँ पर सरकार की बात नहीं होती लेकिन भारत की बात होती है। तो जस्टिस लोकुर ने कहा लेकिन अगर कोई सरकार ये इस्तेमाल करने पर कीन हो और उम्दा हो कि हम तो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं सेडिशन जैसे कानून को, तो वो ये कह सकते हैं कि देश की जो सरकार है वो तो भारत को ही, देश को ही रिप्रेजेंट कर रही है, उसी के बिहाफ पर काम कर रही है, और इसलिए एक और
सरकार 124A आईपीसी की सेडिशन को हटाने की बात कर सकती है और साथ ही में यूएपीए की धारा 13 के तहत लोगों को परेशान करके उन्हें जेलों में भर सकती है, अगर मंशा यही हो तो जस्टिस लोकुर ने इस मुद्दे पर भी रोशनी डाली है कि कोर्ट ने इसके ऊपर अभी कुछ नहीं किया है और यूआपा का कानून हम सभी जानते हैं बहुत ही ड्रैकोनियन कानून है, खतरनाक कानून है एक तरीके से, क्योंकि उसमें तो बेल मिलना नामुमकिन के करीब है। तो ऐसे में लोग फिर मतलब कि हम एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में लोग जाने की ओर स्थिति में ना हो, इस ऑर्डर के बावजूद ये एक शंका जस्टिस लोकुर ने जताई और हमारे साथ शेयर करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस लोकुर। मैं जानती हूँ कि आपकी एक और मीटिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्पीकर। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट Gladson Dungdung to speak to us. He's a human rights defender, a writer based in Jharkhand. Gladson has been deeply involved with the Pathalgadi movement in Jharkhand, during which 10,000 people were charged with sedition. Gladson Dungdung को हम लोग ने बहुत बार सुन भी रखा है, जाने माने आप मानव अधिकारों के प्रवक्ता हैं, आप लिखते हैं, एक्टिविस्ट हैं और झारखंड में आपका बेस है। आप पत्थलगड़ी मूवमेंट के साथ बहुत करीबी से जुड़े हैं और हम सब जानते हैं कि पत्थलगड़ी में 10,000 लोगों पर राजद्रोह का कानून इस्तेमाल किया गया, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के साथ ही इलीगल माइनिंग और तमाम गलत जो पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लैडसन। आप अपने आप को अनम्यूट करें और अगले 15 मिनट में आप अपनी बात रखें। I will provide a translation after Gladson has spoken. धन्यवाद, जोहार सभी साथियों को, जोहार to everyone. And I think I will speak in Hindi because I saw some messages where people are requesting that we should speak in Hindi. साथियों, मैं पत्थलगाड़ी मूवमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं और आप लोग पत्थलगाड़ी आंदोलन के बारे में आपने सुना है। एक देशव्यापी मैसेज उस समय में चला गया था। यहाँ ये समझना है कि आखिर पत्थलगाड़ी आंदोलन क्या था। पत्थलगाड़ी आंदोलन बहुत सारांश में एक लाइन में समझने की कोशिश आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एक ऑटोनोमस मूवमेंट है और झारखंड ऑटोनोमस मूवमेंट के लिए जाना जाता है। झारखंड स्टेट के लिए ऑटोनोमस मूवमेंट हुआ था, उसके बाद ये एक गांव के स्तर का ऑटोनोमस मूवमेंट है। अब इस ऑटोनोमस मूवमेंट में क्या हो रहा था कि हर एक गांव का ग्राम सभा जो है पत्थर, एक लंबा चौड़ा स्टोन स्लैब जो बोलते हैं, उस पत्थर को गाड़ते थे गांव के मुहाने पर और उसमें मुख्यतः 4 चीजें लिखी जाती थी। एक तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3) का जो परंपरा रूढ़ी प्रथा को विधि का बल देता है, तो उसका व्याख्या लोग इस तरह कर रहे थे कि क्योंकि ग्राम सभा एक संवैधानिक बॉडी है जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, रूढ़ी प्रथा को कानून का स्वरूप स्वीकार किया है, तो ग्राम सभा जो निर्णय लेगा उसको ग्राम सभा में लागू किया जाएगा। दूसरा चीज लिखा जाता था संविधान का अनुच्छेद 19 5 और 6। 5 और 6 क्या है? लार्जली 19 में बात किया जाता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति देश का कोई भी हिस्सा में जा सकता है, रह सकता है, बच सकता है, वहां पे जो है कि व्यवसाय कर सकता है। लेकिन अगर 5 और 6 का आप बात करेंगे तो उसमें स्टेट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना है, लेकिन स्टेट ने अभी आज तक नहीं लगाया। तो इसी को ग्राम सभा अपने तरीके से लिखा है कि इस एरिया में गैर रूढ़ी प्रथा वाले लोगों को घूमना फिरना मना है और यहाँ पे रहना बसना या व्यवसाय करना मना है। उसके अलावा अनुच्छेद 244(1) भाग का पैरा 5, बेसिकली इसमें गवर्नर को 5वीं अनुसूची को लेकर अधिकार दिया गया है कि 5वीं अनुसूची का रक्षा उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन आप लोग जानते हैं इस देश में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं
वहां के गवर्नर ने क्या किया है ये किसी से छुपी नहीं है। महाराष्ट्र ही एक स्टेट है जहां गवर्नर ने कुछ किया था जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अब ये भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, आखिर ये जो पत्थलगाड़ी के द्वारा आदिवासी लोग घोषणा कर रहे थे कि ये गांव हमारा है, इस गांव में आप आएंगे तो हमें जो है कि पूछिए, ग्राम सभा से पूछिए, उसके बाद ही आपको अंदर जाने की अनुमति होगी। अब इसके पीछे क्या तर्क है, इसके पीछे कारण क्या है, उसको समझना चाहिए। उसको स्टेट और मीडिया समझे बगैर इसको दनादन जो है कि जिस तरह से हवाबाजी मीडिया स्टेट के साथ मिलकर करते हैं, उसी तरह इन्होंने किया। आप जानते हैं कि पूरे झारखंड में, अगर पूरा देश का बात ना करें तो पूरा झारखंड में आप देख लीजिए, जब से टाटा को बैठाया गया है उसके बाद, आजादी के बाद भी आप देखेंगे तो विकास के नाम पर, राष्ट्रहित के नाम पर, जनहित के नाम पर हर एक जगह आदिवासियों का जमीन जो है कि पूरा का पूरा जमीन लेके वहां पे कहीं पे जिंदल नगर बसाने की, कहीं मित्तल नगर बसाने की, टाटा नगर आप जानते ही हैं, 24 आदिवासी गांव को जो है कि उन्होंने लूट लिया, उनको जो है कुछ ना मुआवजा दिया, कुछ नहीं दिया, आज टाटा नगर बस गया। वहां आदिवासी जो है कि 95% से घट के 5% में आ गए हैं। ये हालत रांची का है, हर एक जगह जो भी आदिवासी इलाका है, जो आदिवासियों का गांव था, वह शहर बसा, आज आदिवासी गायब हो गए। जबकि यहाँ का कानून भी, जमीन का कानून बोलता है आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं। 5वीं अनुसूची के तहत जो है कि टेरिटोरियल राइट है आदिवासियों को, कि आदिवासियों के इलाके हैं। इस देश के की सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी जो है कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका, किन्हीं ने कोई मिलके आदिवासी क्षेत्रों को संरक्षण नहीं दिया। ये इसका पीछे है, मतलब इसका बैकग्राउंड में है। अगर तत्कालिक कारण आप देखेंगे तो पूंजीपतियों को झारखंड बनने के बाद लगातार यहाँ पे एमओयू हुआ है। बीजेपी की सरकार थी, अर्जुन मुंडा अकेले जो है कि 53 एमओयू किए, जो नेहरू का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया था। और उसके बाद लगातार एमओयू होते गए, जिंदल आ रहा है, टाटा आ रहा है, मित्तल आ रहा है, सारा का सारा पूंजीपति आ रहे हैं। उसके बाद में फिलहाल आप देखेंगे तो 2014 से जब बीजेपी की सरकार आई, गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि पहले इतना जमीन लूट नहीं पा रहे थे, तो एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी बड़े नामों को जो है कि उन्होंने हटा दिया। आप सोचिए ना, मोदी लहर देश में चल रहा था, लेकिन अर्जुन मुंडा यहाँ पे हार गए, क्योंकि अर्जुन मुंडा मित्तल से तो एमओयू किए, लेकिन मित्तल को बैठा नहीं पाए थे। तो पूंजीपतियों को लगा कि गैर आदिवासियों को, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाइए, उसके बाद ही यहाँ पे जमीन हम लूट सकते हैं, खनिज संपदा लूट सकते हैं। उसके बाद जो है कि निरंतर एमओयू हुआ। जब रघुवर दास बैठे यहाँ पर, तो शुरू में उन्होंने लैंड बैंक बना दिया। आदिवासियों का जितना सामुदायिक जमीन, चाहे वो खेती, गाय बैल चराने वाला जगह हो, या जंगल झाड़ जो वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को अधिकार मिलना है, या उनका जो है कि सरना मसना धार्मिक जगह है, सामाजिक जगह है, सारा जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया, ग्राम सभाओं को बिना पूछे। उसके बाद में है पूरे दुनिया का लोगों को बुलाकर यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। 11,000 पूंजीपति लोग झारखंड में जुटे 16-17 फरवरी 2017 को, और उसमें जो है कि 210 एमओयू हुआ। अब उस समय में फिर इन्होंने CNTSPT कानून को संशोधन कर दिया। CNTSPT कानून क्या है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संताल परगना टेनेंसी एक्ट। इसके पीछे बहुत बड़ा लड़ाई है। हजारों आदिवासी अपना जान जो है कि गंवा चुके हैं। उसके बाद में वो कानून बना था आदिवासियों के जमीन छोटा नागपुर और संताल परगना का सुरक्षा करने के लिए। और ये दोनों कानून बोलता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं। और आपको मालूम होगा, जब केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया 2013 में, तो उसमें कृषि जमीन को अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल था। तो उसी से बचने के लिए इन्होंने CNTSPT कानून को संशोधन लाया और उसमें कृषि भूमि को गैर कृषि कर रहे थे। जब आदिवासी, इसके विरोध में हम लोगों ने जमकर आंदोलन किया, केसेस हुए, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, मेरे ऊपर भी केस हुए। उसके बाद उस समय पुलिस फायरिंग हुआ। एक जो है कि हमारा खूंटी में एक आदमी मारा गया पुलिस फायरिंग में। उल्टे हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर भी ही उसको लेके केस किया गया। तो ये सारे चीज आए। उसके साथ साथ मोमेंटम झारखंड, मैंने आपको कहा, ये चीजें आए तो लगा लोगों को कि अब हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। जमीन, इलाका, लैंड, टेरिटोरी और रिसोर्सेस, ये सरकार और पूंजीपति मिलके कैसे भी करके लोग जगह लूट लेना चाहते हैं। इसीलिए ये पत्थलगाड़ी में ग्राम सभाओं ने तय किया, हम जो है कि मुहाने में एक पत्थर गाड़ेंगे और वहां साफ लिख देंगे
कि कोई भी हमारा अनुमति से अंदर नहीं जाएगा। और इसी को लेके यहाँ का मीडिया जो है उसको बताया कि ऐसे गांव है झारखंड में जहाँ पे ना प्रधानमंत्री जा सकता है, ना राष्ट्रपति जा सकता है, ना मुख्यमंत्री, ना कोई। आप सोचिए, आदिवासियों का जमीन लूट के टाटा नगर बनाया, यहाँ पे कितने कॉलोनी बन गए हैं, कितने अपार्टमेंट बन गए, वहां पे गार्ड बैठाते हैं ये लोग। जब हम लोग जाते हैं, घुसते हैं, तो अपना नाम, पता सब कुछ देना पड़ता है। वहां पे जो है प्रवेश निषेध है, वहां प्रवेश निषेध लीगल है। लेकिन यही काम अगर आदिवासी बोलता है कि मेरे गांव में तुम आ रहे हो, हमको पूछ लो, तो इन लोगों को दर्द होता है। तब इन्होंने कहा ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं, ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं, ये इनके ऊपर जो है कि इनको मुख्यमंत्री ने घोषणा किया हम इनको कुचल देंगे, हम इनको ये कर देंगे, हम उनको ये कर देंगे। उसके बाद में लगातार जो है आंदोलनकारी साथियों के ऊपर जो है कि केस दर्ज होना शुरू हो गया। और केस दर्ज किए, अगर आप बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, बस इसी काम के लिए लोगों ने क्या किया, हर एक गांव में पत्थर गाड़ी कर दिया। उसके बाद सम्मेलन किया, वहां घोषणा किया कि आपने हमारा जमीन लूटा है, आपने हमारा संसाधन लूटा है, हमको कुछ नहीं दिया, हमारा खनिज संपदा है, अब जो सरंडा जंगल में चले जाइए। 1925 से वहां खनिज संपदा निकाला जा रहा है विकास के नाम पर। लेकिन आज भी आदिवासी के बच्चे जो है वहां पे मालनरिस्ट है, वहां जो लगभग 80% महिलाएं जो है खून कमी से जूझ रही। क्यों भाई? जबकि सरंडा में आज भी लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का हर साल खनिज संपदा आयरन और निकाला जा रहा है। ये एक उदाहरण है। तो आदिवासियों के साथ जिस तरह से ये अन्याय कर रहे हैं, सारा खनिज संपदा विकास के नाम पे लूट के लेके जा रहे हैं, उसके साथ साथ जमीन जो है कि ले लेते हैं विकास के नाम पर, कहीं राष्ट्रहित के नाम पे, जनहित के नाम पे। हम कहाँ है भाई? हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है? उस विकास में हम कहाँ है? उस जनहित में आदिवासी कहाँ है? उस जो है कि राष्ट्रहित में आदिवासी कहाँ है? उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो सारा कुछ लेके जा रहे हैं। और जब आदिवासी आवाज उठाता है तो उसको बोलता है ये देशद्रोही का काम कर रहा है। तो उसके बाद निरंतर आदिवासियों के ऊपर जो है कि केस होने लगा। अब ये केस आप देखेंगे तो जून 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक 3 जिला, क्योंकि खूंटी जिला का केंद्र में पत्थलगाड़ी आंदोलन था और उसके एडजॉइनिंग जिला सरायकेला खरसावां एक जिला है और पश्चिम सिंहभूम और एक जिला। तो ये 3 जिला के इर्द गिर्द हुआ था। तो ये पूरे 3 जिले में कुल 30 मुकदमे दायर किए गए आदिवासियों के ऊपर। अब ये 30 मुकदमों में 21 मुकदमे जो है उसमें सेडिशन चार्ज लगाया गया, धारा 124A। अब इसमें अगर लोगों की संख्या आप देखेंगे, हालांकि बहन अंजलि ने कहा 10,000, ये 10,000 आंकड़ा सिर्फ खूंटी का है। खूंटी और सरायकेला खरसावां 2 जिले में देशद्रोह के मुकदमे हुए। बेसिकली टोटल आप देखेंगे तो 11,109 लोग जो हैं जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ। मैं नहीं समझता हूं कि भारत देश में, आजाद भारत में इतने ज्यादा लोग जो हैं जिनके साथ एक साथ देशद्रोह का मुकदमा हुआ होगा। लेकिन आपने देखा कभी कोई संसद में चर्चा नहीं हुई। हमारे 47 MP लोकसभा में गए हैं, कभी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाया, क्योंकि वो पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं के गुलाम बन चुके हैं। भले वो आरक्षण सीट से जाते हैं, वो हमारे हैं नहीं। तो इतने बड़े, आप सोचिए 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ और पूरे देश में अगर हंगामा नहीं मचेगा तो क्या होना चाहिए? इसमें 319 लोग जो है वो नामजद हैं, बाकी जो है कि नामजद नहीं है। लेकिन पुलिस किसी को भी घर से पकड़ के लेके जा रही है, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ 319 नामजद है उनके ऊपर ही कार्रवाई हुई। अब जो चार्जशीट हुआ उसमें 138 लोगों पर चार्जशीट किया गया, 94 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से बहुत सारे लोग जेल में रहे। कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लोग जेल में रहे। 3,192 लोगों को जो है कि फरार घोषित किया था पुलिस ने। अब इन लोगों पर क्या आरोप लगाया गया? आरोप लगाया गया कि ये लोग भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं और सरकारी व्यवस्था को नकारते हुए गांवों में पारंपरिक ग्राम सभाओं का शासन स्थापित करना चाहते हैं, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। आरोप, यही आरोप है। आप सोचिए, अगर ये हम कहें कि पारंपरिक ग्राम सभाओं का शासन स्थापित करना चाहते हैं, ये असंवैधानिक अगर इनको लगता है, ये देशद्रोह का काम है, तो फिर पेशा कानून भारतीय संविधान ने क्यों पारित किया है? पेशा कानून जब पारित किया गया था तो यही कहा गया कि आदिवासियों का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसी को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है।
उसी के बाद आप याद करते होंगे डॉक्टर BD शर्मा और कई लोग पूरे देश के अलग अलग 5वीं अनुसूचित इलाकों में पत्थलगाड़ी किया उन लोगों ने, ये कहते हुए कि आदिवासियों के ग्राम सभाओं को पारंपरिक अधिकार मिल गए हैं, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। तो आप सोचिए कि एक तरफ संवैधानिक दर्जा देने की बात होती है, कानूनन दिया गया है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वही जो है वो असंवैधानिक है, वही देशद्रोह का काम ग्राम सभाएं कर रहे हैं। अब थोड़ा केस की मौजूदा स्थिति पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है। आपको मालूम होगा जब ये 10,000 वाला मामला खासकर खूंटी डिस्ट्रिक्ट का अखबारों में आया, तब यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां थे, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उनको लगा कि शायद ये मामला जो है उठाएंगे तो ये कुछ उनका काम आएगा, और साथ ही साथ जितने हमारे जैसे लोग और भी दूसरे संगठन के लोग हैं वो सारे निरंतर आवाज उठाते रहे हैं। उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी हम लोगों ने कहा कि आपका इलेक्शन एजेंडा में ये मैटर होना चाहिए पत्थलगाड़ी का, अगर आप इसको वापस लेंगे तो हम लोग जो है कि आपको निश्चित रूप से वोट देंगे। तब उन्होंने इसको बजाबता अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम लोग अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पत्थलगाड़ी में जितने भी केस हुए हैं वो सारे केस वापस कर देंगे। इनकी जब सरकार बन गई तब मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने घोषणा, ना सिर्फ घोषणा किया बल्कि उनकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि जितने भी पत्थलगाड़ी के केस हुए और सेंट स्पीति मूवमेंट में जितने केस हुए था हम लोगों के खिलाफ में, वो सारे केस जो है कि वो वापस ले लेंगे। लेकिन 1 साल तक हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे लगातार, उसमें कुछ काम प्रगति पे नहीं हो रही थी। तब निरंतर जो है कि जन संगठन, मानवाधिकार संगठन, एक्टिविस्ट, जैसे यहाँ पे झारखंड जन अधिकार महासभा एक ग्रुप है काफी बड़ा, उन लोगों ने काफी व्यापक तरीके से उठाया, हम भी उसके पार्ट है। फिर हम लोगों का खुद का झारखंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगातार उठाते रहे और संगठन भी उठाते रहे। तो ये जन और आदिवासी महासभा जिसने पत्थलगाड़ी आंदोलन को प्राइमरीली मूव किया है, आदिवासी महासभा ने खुद भी इस मामले को उठाया अपने तरीके से। उसके बाद सरकार हरकत में आई और लगभग 1 साल तक, हालांकि थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा, लेकिन 1 साल बीतने के बाद फिर वही हालत। फिर दूसरा साल हम लोगों ने और ज्यादा तेजी से आवाज उठाना शुरू किया, क्योंकि बीच में ऐसा परिस्थिति बन गया था कि भाजपा जो है कि आज की जो सरकार है झारखंड में उसको ज्यादा दिन रहने नहीं देगी, कुछ भी करके वो गिरा देंगे। उसके बाद ये सरकार गई तो फिर दोबारा जो है कि वो पत्थलगाड़ी वाला जितने मामले वो वापस ले लेंगे, तो हमारे लोग और बहुत परेशान हो जाएंगे। तब हम लोगों ने इसको निरंतर प्रयास किया। आज कुछ स्थिति अच्छी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 में से सरकार ने अब तक 19 केस को वापस ले लिया है। अभी उसमें से जो है 17 ऐसे मामले हैं वो देशद्रोह के मामले हैं, और एक मामला है जिसमें देशद्रोह का मामला वापस उन्होंने किया है। लेकिन अभी भी 4 ऐसे मामले हैं। हाँ, लेकिन उसे एक चीज मैंने छोड़ दिया, उससे पहले मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने कमेटी बनाया था तीनों जिला में कि इन कौन कौन से मामले हैं जिसको वापस किया जाता है, किसको नहीं किया जाना चाहिए, कमेटी को देखना चाहिए। तो कमेटी ने रिकमेंड किया, जिसमें तीनों जिला के कमेटी में ने 30 में से जो है कि 19 मामलों को वापस करने के उन्होंने रिकमेंड किया था, और 7 मामलों में ये आपका सेक्शन 121A और 124A हटाने की सिफारिश की थी। लेकिन फिर जन संगठनों का मैंने आपको कहा कि लगातार दबाव हुआ। उसके बाद कुल 30 मामलों में से 23 मामलों को वापस ले लिया गया। सॉरी, मैं 19 रिकमेंडेशन तक कमेटी का उसको मैंने बोला था। 30 मामलों में से 23 मामलों को वापस ले लिया गया है, जिसमें 16 मामले जो हैं देशद्रोह के संबंधित है। जैसे कि 21 मामले थे कुल, उसमें से 16 को वापस ले लिया गया है। तो उसमें से एक ऐसा मामला है जिसमें हटाया है, मतलब देशद्रोह का मामला हटाया, तो उसको 17 आप गिन सकते हैं, लेकिन उसका पूरा केस वापस नहीं लिया है, इसलिए मैंने 16 ही कहा है। उसमें से देशद्रोह का मामला हटाया है। अभी 4 मामले जो है कि पेंडिंग है, जो कोर्ट में लगातार चल रहा है। उसमें वो लोग कुछ नहीं बोलने की स्थिति में है, और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो टोटल 7 मामले जो है, मतलब ऑल टुगेदर, सिर्फ देशद्रोह का नहीं, देशद्रोह का 4 मामले पेंडिंग है, लेकिन टोटल पत्थलगाड़ी का बोलेंगे तो 7 मामले अभी भी पेंडिंग है,
जो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर कुछ काम होगा और हम लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। अब मैं बस खत्म करता हूँ ये बताते हुए आपको कि पीड़ितों की हालत को भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि ये जो लोग जेल में थे, मैं अभी निरंतर हर एक पीड़ित से बात कर रहा हूँ। ये लोग जो है, जो लोग 3 साल 4 साल जेल में थे, लगभग 3 साल 3.5 साल, और एक आदमी पर, किसी पर 7 केस है, किसी पर 8 केस है। अब ये लोग जो है, अधिकांश लोग पूर्ण रूप से वो डेथ ट्रैप में फंस गए हैं। डेथ ट्रैप में कैसे फंसे हैं? उन्होंने जेल में से बेल लेने के लिए जमीन बंधक रखा है, कहीं मवेशी बेचा है, कहीं पे जो है कि पेड़ बेचा है, कोई जो है अपना रिश्तेदारों से, गांव से, संबंधियों से लोन लिए हैं, तो कोई मतलब लाखों में है। किसी के पास 1.5 लाख का कर्ज है, किसी के पास ₹1,00,000 का कर्ज है। तो आप इमेजिन कीजिए कि वो लोग कितना मुश्किल दिन उनको ये सब चुकाने के लिए लगेगा, और इतना दिन वो लोग जेल में खटे हैं। उनका परिवार, बहुत सारे, खुद एक व्यक्ति जो अर्निंग था वो जेल में चला गया। तो उनका, और डेली मतलब एक गांव के लोगों को आप सुनेंगे तो आपको आंसू बहेगा कि कोई लोग 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में टेंट लगा के जंगलों में रहे हैं, क्योंकि पुलिस उनका पूरा गांव का गांव घेर के रखा है। कहीं हर दिन आ रहे हैं पकड़ने के लिए। क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस मैं इतना कह खत्म करना चाहता हूं। ऐसे प्रतीत होता है कि देशद्रोह का मुकदमा को जो है, खासकर एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत घुमाया जा रहा है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। जैसे आप, हाँ, इसमें और एक केस है जो हमारे साथियों पर हुआ है, जो खासकर एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, कुछ लोग युवा हैं। और आप हंसिएगा ये सुनकर कि कुछ हमारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने मेरा फेसबुक पोस्ट जो पत्थल गाड़ी पर लिखा हुआ है, उसको उन्होंने फॉरवर्ड किया, और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो गया है। तो एक तरह से युवाओं को डराना, धमकाना कि आप आवाज मत उठाओ। दूसरी तरह से आप बताइए, कोई पार्टी की हो, बीजेपी की सरकार आती है, वो देशद्रोह बोलती है। कांग्रेस और जेएमएम की आती है, वो कहते हैं देशद्रोह का नहीं है। मतलब आप क्या, हमें पॉलिटिकल गेम हम फुटबॉल बना के रखे हैं, फुटबॉल समझ के रखा है? तो ये इसको खत्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। साथियों, आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल होगा तो जरूर लेंगे। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्लैडसन जी। और मुझे लगता है कि जो हमने सुना है वो वास्तव में क्या जमीनी हालात हैं उन्हें दर्शाता है। और जब हम बात करते हैं सेडिशन की, राजद्रोह की, तो एब्स्ट्रैक्शन में बात नहीं है, वास्तव में जमीन पर क्या हो रहा है आपने हमारे साथ ये शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम गोइंग टू वेरी ब्रीफली ट्रांसलेट what Gladson told us and shared with us. He basically says that the Pathalgadi movement is an autonomous movement in Jharkhand, and it's really at the most decentralized level. It's at the village level. And essentially a pathal is like a slab of stone. And what people were doing as part of this movement is at a village level, at the gram level, they were putting in these slabs of stones in the ground with inscriptions on it. And what are these inscriptions that are so seditious, that are so scary for governments? These inscriptions are basically reproducing provisions of the Constitution. Article 19(5), he said, he talked about the 5th and 6th schedule being inscribed, essentially saying that the decisions that are taken by the Gram Sabha are supreme, and really giving a call for self-governance, saying that under the Constitution, we have the right of self-governance. We are working under several provisions of the Constitution and simply listing them down. Now, according to Gladson, there is this collusion that we have constantly seen between the media and those in power, and that's how narratives are created which are so dangerous. So while people are being called and their acts are being called seditious, what he's saying is that if we actually examine the rationale for which people have taken to this movement has stood up, the reason really is that in all of Jharkhand, in the name of development, land of Adivasis, of
tribals has been blatantly stolen from them. And there is crony capitalism, which we see in our country, which is rampant. Capitalists are being benefited at the cost of people living in these villages, tribals, Adivasis, who are living in these villages, who are constantly losing everything without being given any form of compensation in most cases also. MOUs are being signed right, left, and center with capitalists. And he says that this is not a new phenomenon. This has been going on for decades. But since 2014, this is something which has got further intensified, where the community land of tribals has been taken away. Several laws were repealed. There were laws that came about as a result of strong people's struggles on the ground. The CNCPT law and other laws that were there, they were repealed. And in the face of all of this, the Pathalgadi movement emerged. And what basically unfolded was the attacks on those who protested. Adivasi communities, people who were protesting against all of these actions of land grab, of taking away all their resources and repealing pro-people laws. When they were protesting, there were attacks on them, physical attacks. Some people were killed in the violence which was inflicted on them by the state, and also several cases were initiated against people, false cases. And that's how the movement really was, the struggle really took root, the Pathalgadi movement. And that is the context in which people were protesting. They're putting up these pathals everywhere. And what they have seen is that when iron ore is being extracted, land is taken away, and the tribals are being completely left to fend for themselves. On the one hand, we talk about development for everybody, but systematically, tribals, Adivasis are being left out of the entire development paradigm. So between June 17 and 2018, in 3 districts, 30 cases were filed, out of which 21 cases, 124A or sedition was invoked. Gladson said that I had mentioned that more than 10,000 people had been charged with sedition. He gave us the exact figure that 11,109 people have been charged with sedition. And unfortunately, what is really alarming is that no voice has been raised in Parliament or other fora about this absolutely unjust act of invoking sedition against so many people, so many Adivasis and tribals in the country who are simply asking for their rights and their constitutional guarantees. 319 people have been named in 138 लोगों का नाम चार्जशीट में डाला है. That's what Gladson said. 319 people have been named, he said, but the police is just indiscriminately coming and picking up anyone that they want. So they have declared more than 3,000 people as having run away, farar ho gaye hain, and these people have been charged with inciting action against the country. So basically wanting to establish their own, the rule of their own village, their Gram Sabha, and challenging the nation state, the country. That is what the charge is. So Gladson's question is, why was the PISA law brought in then? And what are these constitutional guarantees for, which empower the Gram Sabha, which talk about decentralization of power? He talked to us about where the case is currently, and very briefly, he said that the current political party that is in power, when it came to power, the JMM, the chief minister decided in the first meeting of the Legislative Assembly to take back cases. However, there was no progress for 1 year. People had to again come back and struggle in the streets, and
There is constantly, of course, also the fear that the ruling party in the center might pull the plug on the state government. So there is also the fear of repression under a BJP regime if it were to come to power. But he said that people have been protesting and some action has happened. About 16 cases have been taken back. However, there are 4 cases of sedition that are still pending in court, and a total of 7 cases are still pending. Correct me if I'm wrong, Gladson. Yeah, correct. And basically, Gladson concluded by taking us to the situation of those who have been incarcerated, people who have been languishing in jails, what is happening to them? Because at the end of the day, that is really what we are most concerned about. People who are in jail their families are totally stuck in a debt trap. People have had to mortgage their land. They've had to take loans to be able to even apply for bail. Their families are completely devastated. Many of them were single earning members. Many families have been forced to live in tents and forests because of the kind of harassment that they're constantly facing at the hands of the police. And in the end, Gladson said that this is like a political slugfest, a political football between parties. One party calls their action seditious. The other party says this is not. And things have gone to a ridiculous level where just even forwarding posts on Facebook and other social media has been termed seditious, and people have been put behind bars. Thank you so much, Gladson, for joining us today, for so candidly sharing what is happening in Patalgadi, and for setting the stage for the discussion as we take it forward. I'm going to now request Vrinda Grover. Vrinda is, we all know Vrinda Grover. She is one of the best known lawyers, human rights lawyers, women's rights activists in the country. She was one of the advocates in this particular case as well. There were many cases that were filed, which Vrinda will be talking to us about, and in which this victory, however transient or small it might be, I don't think it is small, but which has been achieved. So I'm going to request Vrinda to speak to us for the next 15 minutes. Vrinda, हम सब जानते हैं Vrinda को, वो हम सब की आवाज हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर भी, और लॉयर हैं वृंदा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के मुद्दों पर जुड़ी रहती हैं, कहीं पर भी अन्याय हो तो वृंदा हम सबके साथ खड़ी रहती हैं, सारी कम्युनिटीज के साथ खड़ी रहती हैं जिन पर अन्याय होता है। और ये जो अभी ऑर्डर आया है, आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, उसमें भी वृंदा का एक अहम हाथ है। वृंदा, आपका स्वागत है और अगले 15 मिनट में आप प्लीज अपनी बात रखें। Thank you, Anjali. Thank you to Anhad and Satark Nagrik Sangathan. ये मीटिंग का आयोजन करने के लिए, Anjali, should I speak in English and Hindi? Will it work or does it make matters worse? No, you can speak in whatever language you like, and just choose one language. नहीं, एक ही language में बोलिए. I will translate it so that people. Okay. I thought I'll relieve you of this, but I'll stick to one because otherwise I'll be incomprehensible in both. Okay. So thank you to Anhad and Satark Nagrik Sangathan, because I think it was important to have this meeting. I remember that evening when I was looking on social media, when the order came, there was a lot of confusion. Somebody was like, what is the point? What will we get? There was also a lot of comment, which is very typical of social media, and to which at least I don't waste too much of my time reacting to, that why is it written in this language? Why is it not in formal language? After having heard Gladson, for instance, and what the thought that really crossed my mind was, I wish someone like Gladson was speaking in the Supreme Court. I sometimes feel that the world of courts has got so abstracted from reality that we have, we are no longer talking about people. And I'm not talking about emotions. I'm not talking about, but I am talking about placing the human being at the center of any of our cases. And
I think it is it is almost by design that in the Supreme Court, people are not interfacing with the judiciary, unlike, say, in district court, sessions court, where you at least see the havoc that law is causing on people's lives. And having heard the kind of mayhem that a law like sedition, UAP, etc. are causing, we can also see why this order, interim though it is, plays an important role, both in providing relief to those who are either apprehending arrest or who are unable to speak up or who are already behind bars. And therefore, while it is an interim order, I think it's an important order and a significant order. And I think we also need to understand that this campaign against the offense of sedition has been going on through civil society for very long. And it's not as though the court one day wakes up and decides to give us this largesse. Voices on the ground, voices like Gladson, the kind of research that Article 14 has done, legal academic research done prior to that, challenges posed, a prior challenge by Udayakumar before the Supreme Court. There is conversations like this across civil society. So we need to recognize that these orders come at the back of us raising our voice repeatedly. And therefore, it is not about the Supreme Court is great or not. I'm not even sure why that is ever a conversation. The point is, what is the order? And these are issues that we as civil society speak about. And we must see that these are the consequences of our work, especially when times are so difficult. I remember that evening a client came to me and I actually said to him in all seriousness, who is a client who's active on social media, I said, oh, please go ahead and write whatever you feel like. Otherwise, I'm constantly in panic mode when my clients are posting things, but I'm like, oh no, one more case on our head. I said, but of course we have 153A, so just be careful, don't how you articulate what you want to say. It's very interesting that in this case, but before I go there, just very quickly, because as Anjali mentioned, I am one of the counsels in this case. A whole batch of petitions have been filed. Justice Lokur had said that, there is this in para 8E of the 11th May order, there is this reference to directives. And I thought I'll just share as to where that directives came from and what transpired in court on that day. So as we know, the hearing happened over a couple of days, and there was this whole issue which Justice Lokur has already mentioned, that since Kedarnath judgment of 1962 was decided by a 5-judge bench, a 3-judge bench with the CJI cannot overrule was one view. Many of us do not share that view, and I'll explain the legal grounds about that. But that was one of the issues that was raised in the court. At that point, the court made it clear, all right, while the issue of the reference, etc., is to be decided, why doesn't the state take some, the state kept saying, we can do, the court then said, why don't you do something if you're saying, that you can look into this. And it was in that context that the state, the Solicitor General actually said, we can issue some directives. Of course, all of us urged the Supreme Court that it must be through a judicial order for a host of legal constitutional reasons. The Solicitor General representing the Union of India cannot issue orders on what a state police can or cannot do, what the state judiciary can or cannot do. That would be a breach of the federal structure that our constitution provides us, and therefore it was important that the Supreme Court must issue the orders. However, the court left it open if the union wants to issue any orders. The union anyway, to my mind, was speaking in a forked tongue. There is an affidavit telling us that the Prime Minister is very cognizant of human rights, and there is a written submission on behalf of the Union of India, which is saying Kedarnath is very good law. So at the best of times, I find it hard to comprehend what the Union of India is saying in the courtroom. So I will not waste energy on that presently. So that is what the directive was. It really doesn't matter anymore. I think the directives issued by the Supreme Court will hold. There are some
gaps there, which have been already highlighted by Justice Lokur, and perhaps in time people will come forward to the Supreme Court and secure clarification on those points. I want to move very quickly on who are the petitioners. And I think it's very telling. Two things I found were telling in the list of petitioners that we have. One, that I myself, for instance, have filed on behalf of two women editors, Patricia Mukim, who is the editor of Shillong Times from Meghalaya, and Anuradha Basin, who is the editor of Kashmir Times from Jammu and Kashmir. And the reason why I worked with these two petitioners was because we believe that sedition offense has a particularly impacts on freedom of press, which is part of the larger freedom of speech, but is distinct in its own right. The press has always been held, including in judicial orders, to be the fourth pillar of democracy. We know the state of the press in our country, and therefore the small, limited, independent press that we have, media that we have, both electronic, print, otherwise, is also getting increasingly reined in and punished through the offense of sedition. Secondly, because sedition and Article 19 look at issues of security of the state, etc. These two women editors work in areas where the state can claim that there are some concerns about national security, both in Northeast and Jammu and Kashmir. But interestingly, when I looked at the list of petitioners, the Editors Guild of India, Foundation of Media Professionals, Sashi Kumar, a senior journalist, Arun Shauri and Common Cause. Then you have Patricia Mukim and Anuradha Basin, who I mentioned. So we do actually have many members and two journalists who were themselves facing sedition, Kishore Chandra Wangakhemcha and Kanhaiya Lal Shukla from Manipur. So these were all members of the press who actually have come forward. So clearly the press was feeling the impact of the sedition offense very grievously, both in discharging its professional duty and being able to inform and speak. The other petitioners are People's Union for Civil Liberties. PUCL has also issued a very important statement pursuant to the order of 11th May, highlighting both what the order does and what are the possibilities, which Justice Lokur also drew our attention to, about how other provisions, other penal laws, other draconian laws like UAPA, etc., will and do continue to be used in a malified manner by the state. Another very interesting petitioner is Major General S.G. Vombatkare, and his is the lead petition. And I think Mr. Vombatkare is actually a very important petitioner for the court also to reckon with. He was also the petitioner who challenged the Aadhaar Act, and he has systematically fought and come before the court for freedoms. Here is an 80-year-old retired Major General who has served in the armed forces and has actually fought the 1965 war against Pakistan, etc. And he's actually been in combat himself. So he said in the interview after the order, he said that why do we fight on the borders of the country? Why am I as a soldier willing to sacrifice my life so that people in the country can enjoy freedoms and the independence? And that is what motivates me as a soldier to be ready to sacrifice my life. I thought it was a remarkable way of giving us an insight, and a very different way rather than some jingoistic rhetoric that is usually given. So here we have Mr. Major General Vombatkare as the lead petitioner. You also have Dr. Sanjay Jain, who was an assistant professor from ILS Pune, who's also one of, and Mahua Moitra, a member of parliament from TMC and well-known, somebody whose speeches we are all familiar with. So this is the cast of characters that is before. And I think what is telling, which strikes me particularly after listening to Gladson,
There are two things. One, of course, that there are a large number of members of the press. The second, that individuals have found it very difficult to come forward. People who are directly impacted, and my guess would be from one's own experience of work is twofold. One, once you have been embroiled in these cases, you really don't have the resources or the stamina to continue entangling yourself in long drawn legal processes. So what comes before the court is then representative in character. And very often the Union of India is like, who's before you? Who are these people? Who are these PIL petitioners? Who are these busybodies? And people are dismissed like that, which I find extremely objectionable. It is really these people who are able to come forward in a representative capacity, because those who you have targeted, you have actually been able to target them so severely that they no longer have the stamina. And they definitely have the capacity, but the capacity to come forward and embroil while you are actually dealing with your own cases and trying to see what to do with them. So there is a reason why the individuals, whether in Jharkhand or in Tamil Nadu, find it hard. And I think that's what I mean when I say sometimes perhaps the Supreme Court is so removed from reality that it doesn't know what their lived experience of ordinary, particularly marginalized groups in this country has become. And that is what these representative groups try to take to the court. Of course, we know that in a court of law, it is the grounds on which, the legal grounds on which and I'm going to take 5 minutes just to talk about them. So what we know, it's a colonial provision. It came actually in 1870. It was in Macaulay's draft. For some reason, it didn't appear in the 1860 law. And then James Stephen introduced it in 1870. So when India becomes independent and the constitution comes into being, it is a watershed moment recognized by the constitution. And thereafter, every provision, every offense, every law must meet the test of constitutionality. Otherwise, it must be struck down. That is the principle. And fundamental rights chapter comes in only for one purpose: to rein in the power of the state, to center stage persons' liberties and freedoms of citizens, and to ensure that the state cannot have excessive or arbitrary power and must be accountable to all citizens. And that is, and for that, the power of judicial review of the constitutionality of a provision is given to the Supreme Court or to the High Court, both constitutional courts. The Kedarnath judgment was decided at a time when, and we know that the Constitution of India is a dynamic constitution. Through interpretation, it has been transforming itself as our understandings grow and as we as a republic grow. When Kedarnath Singh was decided, the reigning understanding of the court was that you have to show whether an offense or any provision of law is violating every singular article, fundamental right guaranteed in Chapter 3. That understanding changed in the 70s with what is called the R.C. Cooper judgment of 11 judges, and said that you have to take 19, 14, 21 articles all together, and you have to see whether the challenge that is given, what is its impact, what is its effect on lives of people, and not just what the objective was. Secondly, these are not in silos. These freedoms move together and they don't exist in watershed compartments. And that new understanding when we are saying before the Supreme Court that you don't need to go to a larger bench, it is because what was good law at the time of Kedarnath is over. 11 judges overruled it in 1971. In Puttaswamy, the Aadhaar case in 2017, again it was reiterated
So Kedarnath was passed at a different time. That is no longer good law. And therefore, these matters need to be heard even by a 3-judge bench. Anyway, that's a technical point. They can send it to a 7-judge bench. We are ready to argue before any bench. But the way in which the constitutionality of Kedarnath was looked at, that is no longer good law. Secondly, and this is very interesting, at least I found it interesting, when Kedarnath was made, when sedition was made an offense, till 1973, it was a non-cognizable offense. It becomes a cognizable offense only when the Criminal Procedure Code comes in 1973 through an amendment. A non-cognizable offense means that if you want to arrest somebody, you will have to go and get a warrant from a magistrate. So even when it was a colonial offense, the colonial masters said there should be magisterial oversight before arrest. And in 1973, it becomes a cognizable offense. Of course, it was always non-bailable. It becomes a cognizable offense. And then the police just gets up and whatever tweet, message, whatever they don't like, whatever their political masters don't like, and lo and behold, arrests are being made because, police really has nothing better to do in this country. And it's interesting that this shift to cognizable, this was not there in 1962. This happens in 1973. So the offense that was tested in Kedarnath is not the same offense. It's a different offense. The third point, which I want us to just think about, look at the sentence that the sedition offense carries. There is no provision in the entire Indian Penal Code which has this kind of sentence. You can be sentenced for life imprisonment with fine. And we know that in India, life means life, not 14 years, what Hindi cinema has been telling us. Life imprisonment with fine, or 3 years, or 3 years with fine, or only fine. So I can be sentenced only with fine, or I can be sentenced with life imprisonment. Has anybody ever seen this range of sentencing in any offense in the Indian Penal Code? I have not seen it. And I checked it very thoroughly for this matter. And there is no sentencing guideline. It doesn't say that if you are going to say these kind of things, because after all, it's all about words and visual representation, then it will be, you'll get a higher sentence. It doesn't say anything like that. It just gives this, so it gives unbridled judicial discretion that you can go ahead and give any sentence, depending on, without any guidance to the judiciary, either from the legislature or sentencing guidelines. The other aspects are a little, one other aspect, and the rest are too legal and technical. I won't go into it. Look at the offense, the way it is drafted. So the cardinal principle of criminal law is that the offense must be drafted with precision, because you cannot have an offense that has some dhila definition, and because then nobody will know whether an offense is being committed or not. And why I should know what the offense is, I should be informed by law so that I know what I'm not supposed to do. Now, the words used are so overbroad. They are so vague. They are completely, it's impossible to have a precision with which to read them. And that is what gives the state and its agents complete arbitrary playground for malified and vindictive arrests. For instance, the word like disaffection. And I would disagree with Justice Lokur. I think there is a huge difference between government established by law and state, and we should not concede that distinction. I can have disaffection to government established by law. I am a citizen of this country. I am casting a vote. I may not have voted for this government. I can openly stand and say I have disaffection to the present government. It is not an offense. It cannot be an offense in
a democracy. Otherwise, how can you be a democracy? So words like disaffection, which Kedarnath tried to narrow down and say only if there is an intention or tendency to incite violence. And we know what has come of that. Gladson has told us, Udayakumar will tell us more, and we all have different experiences of different states. What the Supreme Court writes and what the policeman and the politician does on the ground, because nobody is held accountable. There is mayhem going on in the name of the authority that they have. And therefore, I will stop there to say that this provision needs to go because it is legally unsustainable. And while welcoming the order of the Supreme Court, with the gaps that it may have, I still think it's a significant and important order. Our campaign to repeal sedition and all other draconian provisions must continue, and I hope the Supreme Court hears the matter at the earliest. Thank you. Thank you, Vrinda. Thank you very much. Vrinda ने अपने टिपिकल स्टाइल में हमें सारी बातें एकदम स्पष्ट रूप से समझाई और टेक्निकल मुद्दे भी ऐसे छुए इस तरीके से कि हमें हमारी जो समझ है इस पर और व्यापक बन सके। आपने शुरू अपनी बात वृंदा ये कहकर करी कि बहुत दुख की बात है कि केसेस जब लड़े जाते हैं कोर्ट में, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सबसे उच्चतम न्यायालय में, तो जो एक नागरिक है, एक सिटीजन है, एक इंसान है, उससे केंद्र में रखकर वो केस को नहीं सोचा जाता, ज्यादातर नहीं देखा जाता। और आपने ग्लैडसन ने जिस तरीके से लोगों की जो समस्याएं वो जो झेल रहे हैं, जिनके ऊपर सेडिशन का, राजद्रोह का पूरा मामला चलता है, सालों साल उन्हें जेल में काटने पड़ते हैं, उन्होंने जिस तरीके से वो पूरी पिक्चर को पेंट किया था, आपने वहां से बात को उठाते हुए अपनी बात शुरू करी। और आपने कहा कि ये जरूर है कि ये इंटरिम ऑर्डर है जो कोर्ट ने अभी दिया है हमें, ये आदेश है, ये अभी फाइनल जजमेंट नहीं है, लेकिन आपका मानना है कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी ऑर्डर है, अहम ऑर्डर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें आज ये डर था कि हमें जेल में डाल दिया जाएगा, और वो लोग जो कि ऑलरेडी जेल में सज़ा काट रहे हैं राजद्रोह के लिए। आपने बताया कि जो ये पूरा बैच ऑफ पिटिशंस फाइल हुए कोर्ट के अंदर, ये एक किसी एक पिटिशन के कारण नहीं ये ऑर्डर अभी आया है, ये मामले, बहुत सारे मामले थे जो कि आए थे। लेकिन उसमें जाने से पहले आपने जो पैराग्राफ 8E है जिसका जिक्र जस्टिस लोकुर ने किया, उसका क्लैरिफिकेशन हमें दिया जो कि बहुत जरूरी था। आपने कहा कि देखिए 1962 में केदारनाथ जजमेंट में 5 जज का बेंच था। आज ये बात सही है कि कहा गया कि 3 जज का जो बेंच है, चीफ जस्टिस के साथ जो बेंच बना था, क्या वो 5 जज बेंच की बात को नकार सकते हैं, ओवर रूल कर सकते हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है, ये माना गया कोर्ट ने। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हाँ, जब तक हम तय करते हैं कि 7 जज बैठे कि नहीं बैठे, बेंच बनाए कि नहीं, क्यों ना सरकार कुछ इसके ऊपर करे। और सरकार जो इतने बड़े बड़े एफिडेविट फाइल कर रही थी, तो सोलिसिटर जनरल जो हमारे हैं देश के, उन्होंने कहा कि हम अपनी ओर से कुछ डायरेक्टिव्स ले आएंगे। आप सभी लोगों ने जो लॉयर्स थे वृंदा, आपने कहा कि ये सही नहीं होगा। फेडरल स्ट्रक्चर को हमारे देश के ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कोर्ट इसे खुला ना छोड़े कि केंद्रीय सरकार तय कर ले कि क्या डायरेक्टिव्स होने चाहिए हैं। लेकिन फिर भी जो फाइनली 8E में आया है, उसमें कुछ हद तक जो केंद्रीय सरकार जो कि दोगली बातें कर रही थी कोर्ट के अंदर भी, उनके जो डायरेक्शंस थे, डायरेक्टिव्स थे, उन्हें लेने की बात की गई। और 8E उस परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा।
आपने बताया कि आप जो हैं वो 2 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 2 महिलाओं को, 2 महिला एडिटर्स को, बहुत जानी मानी महिला एडिटर्स हैं। पेट्रिशिया मुकिम जो शिलोंग टाइम्स की हैं एडिटर, और अनुराधा भसीन जो कि कश्मीर टाइम्स की एडिटर हैं। और ये एक बहुत समझने लायक चीज है कि हमारे जो लोकतंत्र में एक स्तंभ है जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र का, वो है मीडिया। एक स्वतंत्र मीडिया हम तक बात पहुंचाए, ये बहुत जरूरी है किसी भी लोकतंत्र में। और ये जो सेडिशन का राजद्रोह का केसेस हैं, वो जर्नलिस्ट्स पर जिस तरीके से लगाए जाते हैं, वो पूरे मीडिया का एक कैरेक्टर बदलने का काम कर सकते हैं। गैगिंग ऑफ द मीडिया जिसको हम कहते हैं, कि मुंह बंद करना मीडिया का, उसका काम करते हैं। और इसीलिए अगर हम बैच ऑफ पिटिशंस को देखें, उसमें तमाम पिटिशनर्स हैं जो कि मीडिया से संबंध रखते हैं, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो या फिर बहुत सारे मणिपुर से और भी जगह से जर्नलिस्ट हों। साथ ही में आपने बताया कि जो पिटिशंस हैं वो फाइल की गई हैं PUCL के द्वारा भी, कॉमन कॉज के द्वारा भी, और आपने बताया कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो कि जिनके ऊपर जरूरी नहीं है कि सेडिशन का मामला लगा हो, लेकिन वो खड़े हुए हैं इन अधिकारों की लड़ाई के लिए। जैसे कि वो बटकरे जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उनकी पिटिशन, वो आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, उनकी पिटिशन है। और उन्होंने कहा है कि हम जब सरहद पे खड़े होकर लड़ते हैं देश की स्वतंत्रता के लिए, तो हम लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। वास्तव में देश क्या है? देश तो लोग हैं जो उसमें रहते हैं। और उस भावना से वो और तमाम कई ऐसे लोग, जिसमें कुछ MPs भी शामिल हैं, वो कोर्ट गए हैं। और इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, जिसके अंदर ये कोर्ट का आदेश, ये जो इंटरिम ऑर्डर है, वो आया है। आपने कहा कि ये बात बार बार उठती है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव क्यों आते हैं, आप PIL क्यों लगाते हैं, जो लोग के ऊपर सेडिशन लगा है उनको आने दीजिए, आपको क्या तकलीफ है। और उसकी भी आपने बहुत हमें खूबसूरती से बात समझाई कि क्या जरूरत है उसकी। जो लोगों के ऊपर सेडिशन लगी है, जिनकी बात ग्लैडसन ने करी, अभी हम उदय कुमार जी से भी सुनेंगे, ये सारे लोग इतनी जद्दोजहद में फंस जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं कि वो कहाँ इन मामलों के ऊपर आगे अपनी बात कोर्ट में लेके जाएंगे, ये नामुमकिन के बराबर है। और इसलिए ये इस तरीके की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो लोग सामने आते हैं, उनका काम इतना जरूरी है। और वृंदा, आपने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ, पर आपके जैसे लोग जो कि फिर इन केसेस को आगे बढ़ाते हैं, ये किस तरीके से जरूरी है, क्योंकि इन सब ये जो स्ट्रगल्स हैं, इन लड़ाइयों के बगैर कोर्ट के अंदर भी जो हो रही हैं, हमारे जो अधिकार हैं हम उनको हासिल ही नहीं कर सकते। हम कहते रह जाएंगे कि हम लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लेकिन बोलने की इजाजत नहीं लोगों को रहेगी, यहाँ तक कि ये हाल है। आपने ये कहा कि देखिए, कोर्ट का जो ये मामला उठा और ये जो आया है ऑर्डर, ये कहीं एकदम से किसी कोर्ट की इच्छा हो गई, उन्होंने हमें दे दिया, ऐसा नहीं है। ये खुद में जो तमाम लोग जो जमीनी स्तर पे ये संघर्ष करते आए हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग, उनकी सारे संघर्षों का कहीं पर आज हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है और कुछ अच्छे ऑर्डर्स भी हमें मिल रहे हैं। और आपने बताया कि ये जो बात है कही जा रही है बार बार कि जब तक 7 जज का बेंच नहीं बैठेगा तब तक हम कैसे इसको नकार दें, इस कानून को। इसके पीछे की कहानी भी आपने हमें बताई और आपने कहा क्यों आप इस बात से सहमत नहीं हैं, और चाहे आप कोर्ट में अगर इसको फिर भी होना हुआ और 7 जज का बेंच बैठा, आप सब उसके सामने आर्ग्यू करेंगे, लेकिन आपका मानना यह है कि 1870 में जब फाइनली देशद्रोह, राजद्रोह का केस जो कानून है, प्रावधान है, वो आया था, और जब हम लोग आजाद हुए उस समय पे ये स्पष्ट हो गया, जब 1950 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आई, संविधान आया, कि हर कानून जो इस देश में लागू होगा वो संविधान के
कसौटी पे अगर खरा उतरता है, हमारे अधिकारों के जो लिखे गए हैं संविधान में, हमारे जो मौलिक अधिकार उन पर खरा उतरता है, तभी वो कानून बनने लायक है, रहने लायक है। और इसके लिए जो रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू की ताकत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, वहां से डिराइव हो रही है। तो आपने कहा कि लेकिन ये समय की बात है कि किस समय पे कोर्ट ऐसे मुद्दों को सुनता है। और आपने बताया कि जब 1962 में केदारनाथ जजमेंट आई थी, उस समय पर जो कानूनी समझ थी और जहां पर हम थे, उसके मुताबिक सारे ही अधिकारों को देखकर चीजों को एग्जामिन करने की जरूरत थी। उस समय पर शायद केदारनाथ जजमेंट में जब ये कहा गया कि सेडिशन 124A धारा जो है आईपीसी की, ये लागू रह सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, सही था। लेकिन आज की तारीख में जब कानून का जो दायरा है, वो दायरा तो नहीं, जो कानून के जिस स्तर पे हम आज हैं, वहां पर 11 जजेस ने 1971 में जो जजमेंट दी, उसके बेसिस पे हमें धारा 19, 14, 21 को इकट्ठा लेकर देखने की जरूरत है कि जब कोई कानून लागू होता है उसकी लोगों के जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है। तो आज आपका मानना है कि ये जरूरत नहीं है कि 7 जज बेंच बिठाया जाए, लेकिन अभी समझ वहीं तक है, कोर्ट में जो ऑर्डर आया है वहीं तक है, तो उसे हमें आगे देखना होगा। फाइनली आपने हमें ये बताया कि सेडिशन के कानून को अगर हम देखें, जब वो लागू हुआ था वो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस था, लेकिन आज 1973 में जब सीआरपीसी का कानून लाया गया, लागू हुआ, उसके बाद से ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो गया। इसका मतलब ये है कि जो मैजिस्ट्रेट को ताकत दी गई थी कि वो देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को गलत तरीके से इसमें लाया जा रहा है इस दायरे में, वो भी जो ओवरसाइट थी वो खत्म हो गई है। ये बहुत चिंता की बात है। और दूसरी चिंता की बात जो आपने हमें बताई वो ये है कि किस तरीके की पनिशमेंट, किस तरीके का सेंटेंस इस कानून के तहत, इस प्रावधान के तहत आता है। वो एक तरफ आपको आजीवन जेल में डालने का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, और दूसरी ओर केवल आप एक फाइन देके बच जाएंगे। तो ये जो खाई है, ये अलग अलग तरीके की पनिशमेंट की, ये तो बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके की जो रेंज है, ये बहुत आर्बिट्ररीनेस को इंट्रोड्यूस कर सकती है। अनब्राइडल्ड मतलब बेइंतहा जुडिशियल डिस्क्रेशन दे रही है, और कोई गाइडेंस भी जुडिशरी को नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रोनाउंसमेंट्स आती हैं। और आपने कहा कि ये जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है इस कानून में, राजद्रोह के कानून में, डिसअफेक्शन, जिसे मैं काफी देर तक ढूंढती रही, तो उसे घृणा कहा जा सकता है, अवमानना कहा जा सकता है, मतलब अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। कानून को तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और जो ऐसा कानून जो इतनी बुरी तरीके से इस्तेमाल हो सके लोगों के खिलाफ, उसकी तो बहुत प्रिसाइज तीखी डेफिनेशंस होनी चाहिए, और इसमें इतनी खुली डेफिनेशंस हैं। तो ऐसे से कानून को तो आपका विचार है कि जाना ही चाहिए। और इसमें आपने ये कह के बात अपनी समाप्त की कि जो पुलिस है जिस तरीके से अपने मन से जिस दिन जो मन आया उठा के लोगों को जेल में भर्ती है इस कानून का, इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए, ये बहुत ही चिंता की विषय है। और हमें ये जो ऑर्डर आया है, ये सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, बहुत जरूरी हम लोगों के लिए ऑर्डर है। आप नहीं मानती कि कोई छोटा मोटा ऑर्डर है, बहुत जरूरी ऑर्डर है। इससे लोगों को सांस लेकर अपनी बात कहने की कम से कम ताकत मिलती है। पर सेडिशन कानून हटे, धारा 124A हटे, इसका प्रयास, इसका संघर्ष निरंतर जारी रहना होगा। ये कह के आपने अपनी बात समाप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा, आपने हमारे साथ अपनी ये बातें इतनी क्लियरली कॉम्प्रिहेंसिवली शेयर की, उसके लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी उदय कुमार जी को कि वो अपनी बात रखें. आई रिक्वेस्ट एसपी उदय कुमार जी to please unmute yourself. He's a writer. He's an anti-nuclear activist from Tamil Nadu. He's the convener of People's Movement Against Nuclear Energy, which is protesting against the Kudankulam nuclear power project. And along with 9,000 people, he was charged with sedition. The floor is yours, Uday Kumar ji, in about 12 to 15 minutes, if you can speak to us. Thank you, Anjali ji. And I want to begin by thanking Anhad and SNS for giving me this opportunity to share my own thoughts and feelings about this important issue that the country is debating today. As Anjali ji pointed out, we were struggling against the Kudankulam nuclear power plant. We were not doing anything against the country or the interests of the country. We were not against development or electricity generation or national security. As you may all know, India has a 7,500 kilometer long coastline and 1,050 kilometers falls in Tamil Nadu. Fishing is a very serious economic activity in our part of the world. And in the southern tip of our peninsula, hundreds of thousands of people are engaged in these fisheries activities. Now, of late, because of our so-called development activities, such as setting up thermal power plants, shipwrecking yards, building ports and harbors and all that stuff, the fisheries is dwindling. There is a serious depletion of fisheries resources in the sea, and hundreds of thousands of our young people, young men, go abroad for fishing opportunities, fishing related jobs, and also construction jobs and all. Now, when the struggle started, when Kudankulam nuclear power plant was proposed right after the Chernobyl accident, and it was about to be commissioned before the Fukushima accident, people obviously felt scared. And these kind of projects are not good for a country like ours, where population density is high and a large number of people are living so close to each other. And an accident like Chernobyl or Fukushima will spell a very bad disaster for us. And people took a stand, fought against it. It was only a matter of job for the fisher folks, but for tens of millions of people who live inside, it's a matter of food and nutrition security. Many people in our part usually go to Gulf countries for jobs. But the government of India obviously thinks that the ordinary people of our country do not have a mind of their own. They cannot think through the government's projects and programs and policies. They cannot take a stand on their own. And they cannot decide which is good or bad for them. So when people like us, more privileged ones with modern education and a little bit more exposure to the government's policies and programs, take a stand and stand with them, we are considered to be seditious. And the poor people are also considered to be seditious. As Anjali ji pointed out, more than almost 9,000 people, 8,956 people were accused of being seditious, and 21 cases were filed against us. Now, Prashant Bhushan has been a consistent supporter of our struggle. He took the matter to the Supreme Court, common cause, and I were the petitioners in this 2016 case. And we formed the Kedarnath judgment as the foundation of the case. And we argued in our case that when sedition charges are framed against people, the authorities such as the Director General of Police or the Commissioner of Police must certify that the seditious act either led to the incitement of violence
or had the tendency or the intention to create public disorder. Only after these authorities issue such a certificate, FIRs should be filed and arrests can be made. With this prayer, we fought the case, and Prashantji pointed out to the court already knows that, sedition law is used to threaten activists with legal action, and it is intended to frighten civil rights groups and individual activists, and it tends to force them, coerce them to keep quiet and to keep away from all these power corridors and their policy-making decisions. We also pointed out in the petition, as Justice Grover also mentioned, that thousands of people are denied passports, and without passports, as I described before, cannot apply for jobs or go abroad for jobs. And when young people manage to find jobs, even in private firms, they are required to produce a police verification certificate from the local police station, which are denied to them, and they cannot go to not only government jobs, even for private firm jobs in private firms. And we have been often required to produce ourselves in the court of law, and as and when required. So this kind of running back and forth and struggling to make ends meet on a daily basis is quite a challenge. And quite a few people like myself have been denied passport for the past 11 years. Myself, my wife have no bank accounts are frozen, and lookout notices have been issued to all the ports and seaports in the country, and we are being treated as criminals. Now, more than all these legal entanglements, as Vrinda ji pointed out very powerfully, it is a social taunt that is really haunting us. In a small district town or in rural areas, when you are tainted, when you are taunted as seditious, as a desadrohi, it's a serious offense, and your own relatives won't have anything to do with you. When you go to attend the social functions, your own relatives, close relatives and friends keep away from you because they don't want to be seen in public with you because you are a desadrohi. You are the enemy of the state. You are enemy of the country. You are someone the country despises. So that kind of taboo, stigma, and this taunt is really quite a difficult thing. Leave alone the practical difficulties like not having a bank account, a passport, the ability to travel abroad and all that. As far as I am concerned, I used to make a living by teaching courses in Europe and the United States, and I've been denied of that. This economic strangulation, keeping you completely removed from productive economic work and keep you subdued, is a major thing that happens, and not many people talk about that or think about that, because only when you go through this will you be able to understand what this sedition law does to you. And disagreement and dissent cannot be seditious. We are treated on par. People who are facing these sedition charges are treated on par with the dreaded terrorists and dangerous criminals. If non-violent activists, if peaceful activists are treated like this, what kind of message we are sending to the younger generation? Aren't we forcing them to take to arms? That if you are fighting against a government project or policy in a non-violent, peaceful manner, you will be taunted like this, treated like this, and what would you do? And what kind of message do we send to our youngsters, our youth? It also makes me wonder if you are living in a free, independent, and democratic country where you cannot take a stand against a government project or a policy or a program and express your opinion. Now, the constitutional validity of the sedition law has been, as Vrinda ji pointed out, has been questioned, challenged by quite a lot of people. Recently, 2 journalists from Chhattisgarh and Manipur have filed a petition, and now the Supreme Court has
decided to take a stand on this, that the sedition law has been misused, misapplied, and abused and all that. So when the Supreme Court is seeking a response from the union government panics and does not want the Supreme Court to take a hard stand on the issue. So they want to preempt that and came up with a proposition that they would envision that or visit that or something. They said that reconsider, and I think by doing so they are trying to postpone this issue indefinitely. I don't really think that the union government is seriously considering revisiting or reorienting or reconsidering this particular piece of legislation. They are only trying to postpone it indefinitely. And now, because of the Supreme Court order, the sedition law has been put on hold. It is in abeyance, and they have asked the authorities not to file any more FIRs and to let the people apply for bail and all of that. Now, will the government really reconsider this seriously? I doubt it. The Prime Minister has been talking about shedding the colonial heritage, colonial baggage, and all of that, but I don't know. Now, people like us who have been taunted and targeted and traumatized by this definitely do not want this law to exist anymore. It has to be completely rescinded, thrown away. Then there is another school of thought now, the so-called centrists, I think. They say that the offense, that sedition offense must be narrowly defined to cover acts that affect the sovereignty, the territorial integrity, and the security of the state. Now, I really do not understand. The right-wing elements obviously will go for this. These hyper-nationalists who consider themselves as Deshbhakts will always be interested in worshipping their nation, and they want to make this kind of laws even more severe and rigorous. But those of us who are on the left of the continuum obviously want to do away with this. Now, the so-called centrists are coming up with a very dangerous proposition that this has to be defined narrowly and the law has to be retained. As Vrinda ji pointed out, there is a stark difference between the state and the government. If sedition is an offense against the state, we need to consider the concept of state itself very seriously. When the state meant the monarch, obviously sedition may have been meaningful. But now the state is not the monarch. We are the state. People of this country are the state. And how can people act against themselves? And especially when they problematize a particular policy or a project or a program of the state, we are not being traitorous. We are not selling out. We are not working. I mean, as we have been taunted, like we are urban Naxals, we are Maoists, we are American stooges, and we have been receiving money from the United States, China, and all that kind of nonsense. And none of these charges has been proved. Even after almost 11 years of the struggle, nothing of this sort has been proved with any kind of documentary evidence. So the state, concept of state has to be revisited. And finally, in the interest of time, I would like to say that, I want to answer the question that has been posed to all of us. This will not be a step towards strengthening freedoms. Now, consider the commissions and the omissions of the Indian state recently, what they are doing with all kinds of draconian laws like UAPA and draconian anti-people institutions such as NIA and all kinds of things. They are not doing this to facilitate democracy, human rights, dialogue in the country. They are doing all these things to stifle people's right to express themselves, people's right to stand up and take a stand on the so-called development activities. Now, I am afraid the sedition law will be made stronger
and we all will be fooled eventually. Thank you. Thank you very much, Udayakumar ji. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. I am going to translate into Hindi for all our friends who've joined, who would like a translation. आपने हमें बताया कि ये जो प्रोटेस्ट, जिसमें कुदनकुलम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था, वो देश के खिलाफ नहीं था प्रोटेस्ट, वो किसी भी तरीके से देश के विकास के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेटिंग अप के खिलाफ था. और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का डर चेर्नोबिल और फुकुशिमा और ये सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जब खराब डिजास्टर्स हुए वहां पर, उससे जो देखा गया कि किस तरह से लोगों के ऊपर कुप्रभाव पड़े हैं, उससे एक बहुत गंभीर डर था लोगों के मन में जब अनाउंसमेंट हुई कि कुदनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी है वहां पर, लोग करीब करीब रहते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा बना कि वहां पर ये नहीं लगाया जाए. दूसरी बात यह है कि फिशिंग जो है लोगों के लिए एक बहुत बड़ी काम का जरिया है, और हजारों परिवार ऐसे हैं जो कि फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं. और ये जब पावर प्लांट को लगाया जा रहा था तो वो लोगों के जो जीवन है उस पर, उनकी खाद्य सुरक्षा पर, न्यूट्रिशन पर, सब चीजों पर एक बड़ा डर का प्रकोप एक बन गया, और उसी कारण से लोगों ने प्रोटेस्ट किया. अब जब प्रोटेस्ट हुआ तो आपने बताया कि 21 केस लगाए गए 9000 के करीब लोगों के ऊपर, और सरकारें सोचती हैं कि लोग अपने लिए सोच नहीं सकते. तो जो भी ऐसे लोग जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ली है, जो कि खड़े हुए लोगों के साथ में, उनके ऊपर भी सेडिशन के तमाम केसेस लगाए गए, आप जैसे लोगों पर भी. और जो केस है वो कॉमन कॉज और आपके द्वारा प्रशांत भूषण के जरिए से कोर्ट में ले जाया गया, और जो पिटिशनर्स हैं उसमें आप भी शामिल हैं, जिस केस के अंदर ये ऑर्डर अभी आया है. आपने बताया कि केदारनाथ की जो जजमेंट थी, केदारनाथ मैटर में 1962 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये लिखा गया था कि या तो हिंसा को भड़काया जाएगा या फिर पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए काम होगा, तब उसे राजद्रोह माना जाएगा, सेडिशन माना जाएगा. तो आपकी कोर्ट से ये गुजारिश थी, आपकी पिटिशन में प्रेयर थी कि जब भी पुलिस ऐसा एक्शन ले, पब्लिक अथॉरिटी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो काम था लोगों का जिनके ऊपर एक केस लगे, वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस या इंटेंशन टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर उसमें था, वो डिक्लेरेशन दे स्टेट. आपने हमारे साथ शेयर करा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को जिनके ऊपर राजद्रोह के केसेस लगाए जाते हैं, किस तरह से लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल ईस्ट में जाके काम करते हैं, उनके पासपोर्ट रद्द हैं, नहीं मिलते उन्हें, उनकी जो आजीविका के साधन हैं, लाइवलीहुड्स के, एम्प्लॉयमेंट के, वो किस तरह से ध्वस्त हो गए हैं, पासपोर्ट नहीं मिल रहे, ध्वस्त हो गए हैं उनके साधन, जैसे कि जस्टिस लोकुर ने बताया था. आपने कहा कि कैसे बार बार कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है. अब आपका और आपकी पत्नी का जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको नहीं खोला जाने दिया जाता है कई बार, और जो एक लगातार एक सोशल स्टिग्मा जो है कि आप जिनके खिलाफ ऐसे केसेस होते हैं कि वो तो देशद्रोही हैं, वो तो अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अपने ही परिवारजन भी जो हैं और अपने ही जो साथी हैं, लोग हैं जो रहते हैं पास में, वो भी किस तरीके से टॉन्ट करते हैं, किस तरीके से ताने देते हैं, और लोगों को किस तरीके की इकोनॉमिक, जो कि आर्थिक और सोशल, जो सामाजिक
तकलीफें हैं वो सहनी पड़ रही हैं, और केवल इसलिए कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं सरकार की कुनीतियों के खिलाफ, गलत जो डिसीजंस हैं उनके खिलाफ। और आपने कहा कि सेडिशन के कानून में कैसे ऐसे लोगों को ड्रेडेड, जो खतरनाक टेररिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनकी बराबरी में खड़ा कर दिया जाता है, उनके बराबर बना दिया जाता है। और ये तो पूरी तरह से प्रहार है लोगों की बोलने की स्वतंत्रता पर, गलत जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की स्वतंत्रता पर। और आपने कहा कि जो यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम सोच रहे हैं हम सेडिशन को हटा देंगे, सब बेकार की बातें हैं। वो केवल घबरा गए और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को किसी तरह से लंबित कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम खुद कुछ कर लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी कि हम कोर्ट इस सेडिशन को अबेंस में डाल रहे हैं, हम उसको होल्ड कर रहे हैं। लेकिन आपका मानना है कि इस कानून को, इस प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए, रिपील कर दिया जाना चाहिए, और जो कुछ लोग कहते हैं कि इसको रिटेन करिए, इसको रखिए, पर इसको संकुचित कर दीजिए, नैरोली डिफाइन कर दीजिए, वो आप उस बात को नहीं मानते, क्योंकि वो तो केवल सरकारें जब चाहेंगी उसे मिसयूज करती रहेंगी और लोगों के जो अधिकार हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको कुचलती रहेंगी, बोलने के अधिकार को, अपनी बात व्यक्त करने के अधिकार को कुचलती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदय कुमारन जी। 11 साल आपने कहा स्ट्रगल हो गई, अभी तक सरकार कुछ प्रूव नहीं कर पाई। जो लोग कुदनकुलम में जिनके खिलाफ सेडिशन के केसेस थे कि वो यहाँ से फंडेड हैं, वहां से उनकी गलत काम है, कुछ नहीं प्रूव कर पाई, फिर भी लोग सफर कर रहे हैं। ये है सेडिशन के मामले। आपका बहुत शुक्रिया, और बिना कुछ और समय लगाए मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी नेक्स्ट स्पीकर की ओर। लुभियाती रंगराजन जी, जो कि एडिटर फॉर डेटाबेसेस हैं आर्टिकल 14 में, और आप शी इज द एडिटर फॉर डेटाबेसेस फॉर आर्टिकल 14, हैज हेडेड द प्रोजेक्ट टाइटल द डेकेड ऑफ डार्कनेस, एक दशक अंधेरे का। आपने उस प्रोजेक्ट को हेड किया है, और आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डॉक्यूमेंट किए हैं, जैसे वृंदा ने भी कहा, केसेस जहां पर सेडिशन का इस्तेमाल हुआ है, 124A धारा का इस्तेमाल हुआ है, और आपका काम हम सब लोग फॉलो करते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि जब चेंज आता है, जब कोर्ट्स में भी बदलाव आता है, तो ऐसी सारी तमाम चीजें इकट्ठे आती हैं, लोगों के संघर्ष जमीन पर, इस तरीके की रिसर्च जो पुख्ता चीजों को सामने लाती है, इन सब चीजों को मिलकर, और अच्छे जब वकील खड़े होते हैं वहां पर, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर हमें कुछ अच्छे ऑर्डर्स हमारे लिए लाती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमें ज्वाइन किए लुभियाती, और आपने बहुत पेशेंटली वेट किया। पर मैं चाहती थी कि एंड में आप सारी जो अपनी बात है और जो डॉक्यूमेंट आपने किया है उसको आप रखिए, जिससे कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन the country due to this draconian colonial legislation comes to our view. Thank you, and the floor is yours for the next 12 to 15 minutes. Thank you so much to to Anjali for that wonderful introduction, to my co-panelists, to the audience here for waiting patiently. As Anjali said, we at Article 14 put forward this study on sedition called The Story of Sedition in India over 10 years, technically 12, which we call A Decade of Darkness. And, before I get into the findings of the study, why did we do this work is also important. So why did we put out this sort of study over 12 years? And the sort of trigger for it was the anti-CA protests that happened in 2019 and 20 across India. And of course, in the time preceding that, which is since 2014, there has been a decline in, speech and expression, as well as the force of the law, the violence of the law on people who want to say things about the government. And so, but the anti-CA was sort of I would say, the final trigger for us to really think about how this law is being used, where is it being used,
And who is it being used against? Why is it being used? Because we felt that there are bigger social, political, and legal complexities that are all coming together in sedition. And so we needed to sort of show how it has evolved over time. And actually my co-panelists, two of whom have, in geographically very different parts of the country, Tamil Nadu and Jharkhand, actually are representative of that story, which is the changing nature of sedition over governments over time, as well as representative of the fact that there are some very deep political fault lines and very deep struggles in this country, of which sedition is a sort of, you could say, a manifestation of that. Because what both panelists did was actually describe that entire political backstory, which is so important in the context of sedition, which is why the case was filed against them. So to sort of understand that legal response, or the depth of that legal response, which is the use of sedition, is why we wanted to document it. And so what we found since 2010 was certainly that while the decade began with all of those sedition cases filed against thousands of people in Kudankulam, the decade sort of ended, which is 2020 or 2021, ended with, for example, the CA protests, the Hathras protests in UP. And in the middle, we also saw cases filed against the Jat agitation, the Patitar agitation, of course, the Pathalgadi movement. And so, the decade was sort of marked by all of these protests by groups across the country, geographically diverse, linguistically and diverse on religion and caste. Of course, the point of the story is also that the meaning of sedition, as someone mentioned earlier, the meaning of sedition also evolves with who is in power, and what they believe should be loyalty towards them. And so while under the UPA 2, you saw a particular kind of loyalty, we sort of documented cases being filed against people who protest development, economic development projects, or even left-wing extremism. And so a lot of cases that we saw were in Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, and of course, Tamil Nadu. That changed after 2014. And then a very different type of seditious person started to emerge after 2014 under this government. And that only got louder and louder again after 2019, after the BJP won again. And so what we saw after 2014 was, of course, the rise of the, the conflation, I would say, of also religion and nationalism. So to be anti-India today is also to be anti-Hindu. And so both of these things are also seditious today. So, this is sort of, I would say, how the decade was broken up. But another very important discovery from our work, and that also forced us to think about, these new kinds of sedition cases and what we started to call the category of the everyday. Because what we have discussed until now, or what seems to be in the imagination of the public of who is seditious, is, yes, very often the protester, the critic, the outspoken voice against the government. But what we found is that there are a lot of people who do not fall under this bracket of criticism, protesting, or anything of the kind. In fact, they are very often young Muslim boys in the age group of, say, 17 to maybe 30, who use social media and who happen to post around certain quote unquote sensitive times, and then find themselves immediately arrested by the police. It's not only social media users, of course, that is one category of cases, but the other kinds of cases we found that we call the everyday case, which is ordinary people doing ordinary things that are today considered seditious. Under this category, there are also people who, in one case, a group of boys in Bihar who were dancing to a song whose lyrics were apparently objectionable. In another case we found in Karnataka,
a sedition charge was filed in the context of a marital dispute between, where the husband filed a case of sedition against the wife and her family. The FIR does not mention at all why sedition was filed. So, this is the sort of every day, there is no criticism, there is no protest, there is no sort of outspoken voice against the state, and yet this is being done. In another case, the trigger for the case was actually a loud bike silencer in a case in UP. And so the complainant in the case was offended by this bike silencer that disturbed him in the afternoon, and ended up filing, and that sort of triggered into some kind of conflict between two groups, and a sedition case was filed. And so this kind of complexity, of course, in sedition is what we discovered. And to sort of come back to the social media, and we, some of our panelists have referred to that, when something is posted on social media, it then travels into the hands of the police. And this is also a very important journey for us to understand, particularly around the Pulwama time in Feb 2019. In Karnataka, UP and Assam, there was already that kind of cybercrime surveillance by the police on what people are posting. And in all three states, we documented several rural social media users who come from, low socioeconomic backgrounds, who happen to like a picture or post a picture or change their WhatsApp display picture or post something on Facebook, thinking that they are supporting the Indian government, and it happened to be supporting, Pakistan. Now, these kinds of things, and when we interviewed them on the field, many of them, of course, said, we didn't know what we were posting. We didn't know that this is, seditious. Or that, the moment we posted it, 5 minutes later, the police came and arrested me, or 30 minutes later, the police came and arrested me. And I think the other thing that we learned from our interviews is the speed with which the police has filed these FIRs, gone to the person's house and picked them up for that post, which also then got us thinking about how these social media posts travel in those hyper-local settings, in those villages and districts where everyone is on a WhatsApp group, where anyone can take a screenshot of what you have posted and send it to the local police thana on their WhatsApp number. And this is sort of the new, I would say, very dangerous pattern we've seen emerging out of the use of social media, not just the use of social media, but how that tweet or that post or that WhatsApp message reaches the hands of the police. And this brings me to sort of my, another finding for us, which is that since 2014, the rise of the nationalist complainant, it's no longer just the police who are filing the FIRs, but there are actively public right-wing voices who proudly sort of say that they are going to file a sedition FIR against, for example, a 36-year-old electrician, a 23-year-old waiter in Assam, a shepherd in Karnataka who studied up to 3rd standard, who did not know, who couldn't read and write Kannada on his phone, thought he was posting something and had no idea what he posted. Again, this is not to sort of say that this is in fact seditious or these posts are seditious in any way, but it is just the sort of, and, to look at the background of, why a complainant would even want to do this is because there is a certain political climate. So of course, all of this is in the backdrop of that political climate, conversations about, not engaging with Pakistan as a country, or that anything about, saying anything about them in public would be considered seditious. So what we discovered from the everydayness category, which is none of these people had criticized, protested, spoken out against the government, said anything about policy, and yet were considered, seditious. And what that also, what that tells us is certainly that the net or the understanding of sedition now is sort of defies any legal logic. It defies any sort of, constitutional considerations. It's a very, very
we already know that the language of the law is vague. We already know 124A, the way it's worded is vague, which is why the guidelines were set in place, which is why Kedarnath Singh came in, which is why in the law itself, there is an exception that criticism is not sedition. But what about all of these cases that fall outside of that? People who don't know what they are posting, or, and why should that post, of course, be considered seditious? I mean, that's a question, that's a general sort of question about all of this. But, so I think what I think what makes it very hard to have that conversation also about guidelines to regulate the use of sedition. Something that our research told us was exactly this, that ultimately, it's not just the fact that the police have filed the FIR in that particular village. It is also how they were pressurized into doing so. When you have, right-wing groups protesting that an FIR must be filed, or when you have someone from that group sitting in the police station and dictating the charges to be filed in the FIR, which happened in a case in UP, it's, how do you expect guidelines to regulate that, especially when, we understand that there is a political climate created. For example, around cricket, and in 3 separate instances, in 2014, 17, and 2021, the latest being the T20 match between India and Pakistan. Before that was the ICC Champions Trophy in 2017. In all of these instances, 3 separate instances since 2014, India lost to Pakistan. And, inevitably, sedition cases were filed. I mean, I say inevitable because, this is the sort of climate we're in. But, in all 3 sort of instances, sedition cases were filed against people who were apparently supporting Pakistan's win against India. In both those instances, in 2017 and 2021, there were Kashmiri students who apparently supported this. And in both those instances, the sort of how the legal process played out was quite similar, in the sense that both were boycotted by local bar associations in Karnataka and in UP. Local lawyers refused to represent them. They were mobbed when they went to the district courts. Bail was denied several times by the trial court. So, so this is again, the idea that the legal process is the punishment. This is how the legal process is the punishment in sedition cases, as my co-panelists also pointed out, which is, it is not just the fact that the case is filed against you. It is also what happens after the case is filed against you. And particularly in these cases, when, it's a question of, India versus Pakistan, that sort of makes it even harder to even get a lawyer to represent you, because nobody wants to represent you. And then to find somebody who represents you, you have to pay them. And then, of course, every hearing, there's an expense to that. Not only that, when you finally get bail, and in fact, in the case in 2021, where 3 students were arrested after sort of allegedly supporting Pakistan's win, they were boycotted by the Agra Bar Association. Their bail hearings were, it took about 7 or 8 hearings before the district court for them to get bail. They were in jail for a month even after getting bail, because they did not have the resources to pay bail bond. And so, the families again, and we heard this before from our other panelists, had to sell their land or, sell other assets just to be able to pay bail bonds. Now, of course, it doesn't end here. So they may have to keep reporting to the local police station. The local police will keep surveilling them. It's not going to end. And of course, this comes in the backdrop of the Chief Minister of UP saying, explicitly making a statement that anybody found supporting Pakistan will be arrested under sedition. This is the Chief Minister of a state in India saying that. So, to then sort of in this context, therefore, in this kind of loaded political context, to even have a conversation on narrowing the use of sedition, or even something like the misuse of sedition, which is also an interesting word, because to me, it presumes that there is a way to use sedition in the right
way that, you know, if sedition were narrowed down, then this is the right way to use sedition. But it's not possible. It's not possible to use this law in the right way. You know, these are not just, you know, and this was also an argument put forth by the Solicitor General. I mean, there was a, you know, there were arguments before court being made about the misuse of sedition. It can be guided, you know, the police can be told how to use it. It's not possible. You cannot, it's impossible. The mix of the local politics, the mix of police power, the mix of when the Chief Minister of UP makes a statement like that, which police officer can say, no, we are not going to file a sedition case because it does not follow the Kedarnath Singh guidelines or, you know, other guidelines. So, you know, you know, to therefore to when you sort of look at the research, not just of course the you know, empirical or the data, the numbers of how many cases are filed against how many people and in what context they're filed, but also what are the realities of what happens after the FIR is filed. Even after you are granted bail, there are so many things you have to do. So for example, we spoke to you know, a daily wage laborer in Karnataka who said because he's a daily wage laborer, he'll miss out on every time he has to go to the district court, which again is, you know, hundreds of kilometers away from his village. Each hearing he loses a day's wages. Each hearing he'll have to pay that much money to go there. And so, you know, this kind of, and ultimately, given the rates of acquittal and conviction, I mean, considering you may have only 10 people convicted out of, you know, 10,000. So what is really happening then? If the, you know, if, and I'm not making an argument here that, you know, we must have convictions in sedition, but the fact that if you have more acquittals than convictions, clearly your evidence is not strong. You know, the prosecution is not able to make that case. And how could they? How could a t-shirt be seditious? How could dancing to a song be seditious? How could, you know, supporting another team in a cricket match be seditious? So what kind of, you know, case are you then building up before court? What kind of case is the government building up? Of course, it's going to lead to an acquittal. I mean, you know, this cannot fall under any reasonable judge would say this is not incitement to violence. No violence was incited by wearing this t-shirt. So, you know, I think to sort of sum up all of this, I mean, from just the combination of the fact that the speed with which the executive moves when it has to, combined with the slowness of the court and the legal process. So together it creates this kind of very, very difficult, ultimately, and difficult is an understatement, but difficult situation for the accused, who may eventually have a higher chance of getting acquitted 10 years later, if they are lucky. And of course, in those 10 years, you're paying an economic cost and a social cost, which is also so important, and which, you know, Mr. Udayakumar mentioned, which is that stigma of that tag of, you know, being a Deshdroh and a Rajdroh, because of which you can lose your job, you will lose your family, you may be ostracized, you will have to move villages, which happened to people that we interviewed. Somebody had to move out of where they were because of that tag. So, you know, all of this sort of put together, I would say, it really is the story of sedition in India, which is, it is no longer actually just people who are outspoken and who are critics. It could really be anybody for anything. And that is what is so scary about where we are right now. Thank you so much, Lubhyathi. Thank you for sharing with us the findings of your work. Thank you for doing the work that you and Article 14 do. I think it's so valuable. We're also joined by Sudhir Vombadkereji, who's also putting some stuff on the chat. But I think all of us are very grateful for this kind of, you know, very, very focused, very objective work that is put out by you and the entire team that works on this at Article 14. मैं थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ जो बातें लुभ्याथी ने कही। आपने कहा कि जो आपका काम है सेडिशन के ऊपर, राजद्रोह पे, आपने उसको राजद्रोह की कहानी
एक दशक में कैसी रही उस तरीके से देखा, और जो एक दशक जो अंधकार का दशक है उसको जब आप देखते हैं तो वो कहाँ से आपके मन में बात आई कि ये काम होना चाहिए। वो जो हमारे देश में एंटी CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो विरोध था, जो पूरा प्रोटेस्ट था, उसमें क्या हुआ, उधर से कहीं ये हुआ कि तो करना चाहिए, ये रिसर्च बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि 2014 से ही हम देख रहे हैं किस तरह से जो सारी स्पेसेस हैं वो श्रिंक कर रही हैं, बोलने की आज़ादी, बात उठाने की आज़ादी, और किस तरह से 2014 में जब ये रेजीम आई है तो धर्म और राष्ट्रवाद कैसे इकट्ठे जुड़ के एक बहुत ही डेंजरस सा एक कॉन्फ्लेशन हो रहा है, और जिसको फिर अलग अलग रूप से लोगों को टारगेट करने की कोशिशें चल रही हैं, और सेडिशन एक राजद्रोह एक पूरा पुख्ता तरीका बना हुआ है उसको करने का। आपने बताया कि 2010 का दशक ही शुरू हुआ कुडनकुलम से, क्योंकि ये किसी एक पार्टी की दिक्कत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि 2014 से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, प्रॉब्लम तो पहले से थी राजद्रोह के इस्तेमाल की। 2010 में कुडनकुलम हमने अभी सुना भी था उदय कुमार जी का, पूरा जो लोगों के खिलाफ राजद्रोह का इस्तेमाल हुआ, फिर वहां से पत्थलगड़ी की बात, और फिर CAA जो जाट प्रोटेस्ट है, और फिर हाथरस का भी जो पूरा मामला था जहां पर राजद्रोह का इस्तेमाल किया गया। तो आपने कहा कि लेकिन जो राजद्रोह है वो उसका इस्तेमाल, उसकी समझ कैसे डेवलप हो रही है वो पावर से रिलेटेड है, और जो पावर में है, जो सत्ता में है, उनकी क्या लॉयल्टीज हैं, जो लोग हैं उनकी क्या लॉयल्टीज है, उसके अकॉर्डिंगली आपका शोध दिखाता है कि राजद्रोह भी इवॉल्व हो रहा है हमारे देश में। और जो ये पोस्ट 2014 ये धर्म और राष्ट्रवाद का जो ये बहुत खतरनाक मेल हुआ है, उसके अराउंड भी जो आपने केसेस देखे हैं वो दर्शाता है कि कैसे जब पॉलिटिक्स चेंज होती है और पावर स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं और आइडियोलॉजी चेंज होती है तो कैसे राजद्रोह का इस्तेमाल है। आपने कहा कि हम ज्यादातर सोचते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं, जो सरकार के खिलाफ जो नीतियां, जो सरकारी नीतियां उनके खिलाफ बोलते हैं या फिर जो अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, केवल उन्हीं पर राजद्रोह का कानून लागू हुआ है। लेकिन आपने देखा है कि जो यंग मुस्लिम लड़के हैं जो केवल सोशल मीडिया पर कुछ चंद बातें लिख रहे हैं जो सिडिशियस मतलब होने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि सिडिशन में अगर हम केदारनाथ जजमेंट देखें तो उसमें है कि भाई हिंसा होगी, हिंसा के लिए इंसाइट करेंगे, मतलब दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। उनका अरेस्ट हो रहा है राजद्रोह के नाम पर। और आपने कहा एवरीडे केसेस, मतलब रोजमर्रा के जो केस आ रहे हैं, कुछ लड़के बिहार में वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं कुछ गानों के ऊपर जिनके लिरिक्स लग रहा है कि ऑब्जेक्शनेबल है, भाई ये क्या गाने थे जिसके ऊपर आप नाच रहे हैं, उनको राजद्रोह में कर दिया। किसी ने टी शर्ट पहनी कुछ लिख के वो राजद्रोह हो गया। मतलब किसी भी रोजमर्रा की चीज को राजद्रोह कह के और लोगों को उसके तहत अरेस्ट करना, उनके खिलाफ मुकदमे चलाना, ये एक प्रचलित सी बात हो गई है। और आपने ये भी बताया कि पुलवामा के समय का जो टाइम था, आपने उसका भी हमें याद दिलाया कि बहुत सारे जो ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में रहने वाले लोग जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं शायद कि हम तो भारत की सरकार के पक्ष में कुछ लिख रहे हैं, पर ये परसीव हो रहा है कि तो पाकिस्तान के पक्ष में कुछ लिख रहे हैं। उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जा रहा है देशद्रोह के मामले बनाकर। और आपने कहा कि आपकी फाइंडिंग ये भी दिखाती है कि किस स्पीड से पुलिस एक्शन लेती है ऐसे मामलों में। 5-5 मिनट में, आधे घंटे में अरेस्ट हो रहा है लोगों का। जो हाइपर लोकल ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ पोस्ट कर दिया, कोई मैसेज आगे कर दिया, उसको लाइक कर दिया किसी मैसेज को, बस उसी के ऊपर भी अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को कि आप राजद्रोह कर रहे हैं, आप के खिलाफ मुकदमा
जारी होगा। तो ये जो पूरे ट्रेंड्स हैं, इसमें आपने एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड से हमें अवगत कराया कि जो नेशनलिस्ट कंप्लेनेंट का जो पूरी कैटेगरी बन गई है कि वो राष्ट्रवादी जो शिकायत करता है, जो कि राइट विंग से कहीं से आते हैं और वो उनकी राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है उन्हें ठेस पहुंच रही है और वो तुरंत जाके कंप्लेंट कर दे रहे हैं। वो चाहे जो गडरिये हैं उनके खिलाफ हो, कोई इलेक्ट्रिशियन है उनके खिलाफ हो, कोई ऐसे प्रोटेस्टर नहीं है, कोई ऐसे बड़े क्रिटिक नहीं कर रहे हैं सरकारी पॉलिसीज का, बस ऐसे हाइपर नेशनलिस्ट जो हैं वो अपनी उसको आगे बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल क्लाइमेट से वो लेते हुए इनकरेजमेंट वो आकर कंप्लेंट कर रहे हैं राजद्रोह के नाम पे। और आपने कहा कि इस टाइप की जो सेडिशन है वो सारी हमारी जो लीगल है, संवैधानिक है, सारी कंसिडरेशंस को डिफाई करता है। मतलब आप ये हम समझ सकते हैं कि लैंग्वेज जो लॉ की है, सेडिशन लॉ की, जैसे वृंदा ने कहा, बहुत ब्रॉड है, बहुत वेग है, उसमें बहुत खुलापन है। लेकिन मतलब क्या हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, इंडिया हार जाता है, कुछ खड़े होकर लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए नारे लगा देते हैं, तो वो सेडिशन हो गया, वो राजद्रोह हो गया। तो ये जिस तरीके का पॉलिटिकल माहौल बन रहा है उससे आज हम देख रहे हैं कि राजद्रोह का इस्तेमाल पूरी तरह से लिंक्ड है। और आपने भी ये बात रखी जो जिसकी लगातार हमें ग्लैडसन और उदय कुमारन ने याद दिलाई कि जिन लोगों के खिलाफ सेडिशन राजद्रोह का केस लगता है उन पर क्या बीतती है, कितनी समस्याओं को उनका झेलना पड़ता है। मतलब यहाँ तक कि लीगल हेल्प मिलना ज्यादातर केसेस में मुश्किल हो जाता है, लोगों को अपने जो घर हैं, जमीन है, उसे गिरवी रखना पड़ रहा है जिससे कि वो बेल दे सके। और आपने कहा कि एक जो चीज मुझे लगता है आपने उसकी ओर इशारा किया और हम लोग भी चैट में देख रहे थे, बात हो रही है कि ये जो ऑर्डर भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको कैसे हम लागू कराएं, इसके ऊपर हमें सोचना होगा, क्योंकि माहौल जिस तरीके का बना हुआ है। और आपने कहा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर ने तो कह दिया कि जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा वो राजद्रोह में अंदर जाना चाहिए। तो मतलब जब हम कहते हैं कि राजद्रोह की डेफिनेशन को नैरो कर दिया जाए, ऐसे माहौल में, ऐसे राजनीतिक माहौल में कौन पुलिस ऑफिसर की हिम्मत होगी कि वो राजद्रोह ना लगाए जब उनके डायरेक्ट चीफ जो है, पॉलिटिकल बॉस जो हैं, वो कह रहे हैं कि लगाना है। तो हमें सोचना है कि किस तरीके से हम अपनी संघर्ष को जारी रखें कि ये जो धारा 124A है, सेडिशन है, राजद्रोह है, इसको पूरी तरह से हटाया जाए, क्योंकि कोई नैरोइंग डाउन ऑफ द डेफिनेशन और द यूज एंड कंटेनिंग इट, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका मिसयूज जो है वो इतना प्रचलित है और रहेगा जब तक ये स्टैट्यूट बुक में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लुभियाती, आपने बहुत इतने पेशेंस के साथ और इतने कॉम्प्रिहेंसिवली हमें सारा कुछ एक्सप्लेन करा, तथ्यों के साथ में एक्सप्लेन करा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनहद की ओर से, शबनम हाशमी यहाँ पर हैं, पर उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनकी ओर से भी और अनहद की ओर से, सतर्क नागरिक संगठन के सभी साथियों की ओर से, अमृता भी यहाँ पर हैं, सभी की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज की इस डिस्कशन में आपने ज्वाइन किया और सारे हमारे पैनलिस्ट्स कुछ जा चुके हैं, कुछ अभी भी हमारे साथ पेशेंटली जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात को इतने स्पष्टता से, इतने कॉम्प्रिहेंसिवली और इतने अच्छे से समझाने के लिए, जिससे कि हम सब समझ सकें कि आज जिस माहौल में हम हैं वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास
और अगर हमारे पर हमला हो तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे लिए क्या मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। धन्यवाद।